All right. So yesterday, what we were doing was we started. In fact, we were done with some text functions, and then we were actually trying to apply it on some use cases like finding the last name if you have a list of full names. So we did this example at the end of the class yesterday, and that was when we were trying to find the last names in a list of names. इनके total जो है हर नाम में there were basically two words there. Like there were two names, and it was a standardized data in that sense that you cannot have more than two names. Or उसमें से you had to extract the last name, and we figured out a way to do that, right? Now let's talk about a more general case, right? So in that case, you don't know beforehand what is the number of names that's going to come in that full name, right? So you could have two names like this. The first case, you could have three names, you could have five names, and so on. ठीक है? अब कोई जो है minimum number of words की requirement या maximum की limit नहीं है हमारे पास. ठीक है? So how do we do with this case? So I asked you to have a look at this, and it's already done. जो मैं आपको फाइल शेयर की थी उसके अंदर. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है ना, generally what happens is you try to think about them. If you're not able to figure out what to do, you tend to use some online resource. So that's what I did for this. So when I encountered this problem the first time a few years back, when I had to do something like this, and I was not able to figure out how to do it, what I did was I Googled, and then I tried to reverse engineer, okay, what's happening at every single step, and try to understand that function के हर step के ऊपर क्या हो रहा है. And that's what I want you to do as well, right? So you don't necessarily need to come up with a complicated formula like this yourself, but what you should be able to do is you should be able to understand if you find the formula somewhere, if you find a function from somewhere, from some online resource, you should be able to figure out कि अच्छा इसको आपने अपने केस के ऊपर किस तरह से थोड़ा बहुत modify करके apply करना है. तो understanding जो है that is important. ठीक है? So that's why I shared this with you, that you need to you should go through this and let me know, okay, यहाँ पे basically a function कर क्या रहा है, how you can describe what is happening at each of the different steps that we have. So anybody who'd like to have a go at this, if you had a chance to look at it, okay, what exactly is happening here? So can I have a raise of hands? So anybody who had a chance and was able to figure out कि function किस तरह से work करे? Anyone? Yes, Zubair sir. अस्सलाम वालेकुम सर. एक्चुअली इसमें इससे से है कि हमें जो लास्ट नेम है उससे पहले हमें फाइंड आउट करने की ब्रेक्स को, जो स्पेस की ब्रेक्स हैं डिफरेंट उनके दरमियान में, नेम्स के दरमियान में, तो हमें वहाँ पे ब्रेक्स की जगह पे कोई वर्ड पॉइंट आउट करना पड़ेगा लास्ट स्पेस की जगह पे. उसको फिर वहाँ से उसको माइनस करवा के टोटल लेंथ से हम वो पोजीशन देंगे उसको सेल को to count the number after that. Okay, all right. Okay, that makes sense. But that looked very simple when you explained it. But when you actually look at the formula, it gets a bit complicated. That is complicated. I know. Yeah. So बहुत सारे different steps हैं उसके अंदर जो आपको करने पड़ेंगे. Okay, so let's actually go through this. So first of all, what you need to understand is हमें last name उठाना है ना. So you need to use the first thing that should come to mind for all of you is basically that you have to use the right function somewhere. ठीक है, आपको right function, आपको right side से कुछ certain number of letters उठाने हैं, तो आपको right use करना है. So that's your first guess, and that's what is happening. सबसे बाहर आपका वो right function लगा हुआ है. ठीक है, आपने right function से start करना है, आपको right side से कुछ number of letters उठाने हैं. किसके right side से? इस text से. इस text के right side से आपने कुछ number of letters उठाने हैं. So that's the first step. That's what I think most of you can figure out at first. ठीक है. Now the problem is ये जो बाकी सारा ये
फंक्शन लिखा हुआ है, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखा हुआ है कि how do we find the number of characters that we have to pick from the right side. ठीक है, it could be 5 characters, it could be 6 characters, it could be 7 characters. How do we know कि last name के अंदर कितने characters आएंगे, है ना? हमने पिछले केस के अंदर क्या किया था? In the first case, how we solved this problem of finding that number of characters from the right side was that we subtracted the position of space, कि space जिस position पे आते हैं उसका index number आपको पता चल जाए, उसकी position number आपको पता चल जाए, आप length में से उसको minus कर दो, तो you'll get the length of the last name. So for example, if total length, total number of characters is 14 in this, that's what you have, and the space position is 9. 9th position के ऊपर space आ रहा है, तो अगर आप 14 में से 9 को subtract कर देते हो, you get your last name, right? So that's fairly straightforward. Now the problem is, अगर आप वही चीज यहाँ पे apply करते हो, in the first name it might work because you got only one space. So यहाँ पे भी आप length में से space को minus करोगे, you will get the number of characters you need for the last name. But the problem comes when you have more than more than 2 names. For example, in the third case here, third case में क्या होगा? If you were to use that same formula here, जिसमें आप क्या कर रहे थे? You had length minus space position. ये find करने के लिए कि last name के कितने number of characters हैं. यहाँ पे क्या आएगा? Total length में से वो क्या minus करेगा? ये first space की position उसको subtract करेगा. तो आप बस बाकी दोनों नाम आ जाएंगे. आपको बस मोहम्मद वलीद पूरा लिखा हुआ आ जाए. However, we only need Walid, right? So that's the problem. कि the find function only picks up the first space that it finds when it's searching. So आपको वो पूरा आपको last name नहीं मिलेगा. It's going to give you everything after the first name. ठीक है? अगर आप इसको पहले वाली केस को उसी तरह से यूज कर लोगे, तो it's not going to work. So let me actually show that to you as well. अगर आप वही function यहाँ पे apply करते हो, there's another problem. There's a problem, and that is it's just going to return you the whole thing. Find space within this. So this is how this works. आपको क्या कह रहा है? So it's just cutting out the first name and giving you everything else in return. So for example, Hafiz Muhammad Waleed के case में it's giving you Muhammad Waleed. Sayyid Muhammad Haider Ali Shah के case में just cutting out Sayyid from there and giving you everything else. So it's not really the last name, it's everything after the first name. Okay, so that's why it worked in the case यहाँ पे हमारे पास दो नाम थे, यहाँ पे it's no longer working. So what do we do in that case? So the solution proposed in this function is, remember, when you have a customized function like this, it's not necessary कि आप इसको एक ही तरीके से करो. So there could be other ways of solving the same problem as well. You could, find out other ways of doing this. This is one of those ways. Okay, and one possible way there is, it says basically you start with the length of the full length. So again, हमारी problem क्या है? हमें number of characters find करने हैं कि right side पे कितने आएंगे, कितने characters उठाने हैं आपको. So where do you start from? You start from the same thing. You find out what is the length of the full name. Okay, all right. So we have the length of the full name here. So for example, for the longest name here that had 5 names, the total length is 29. Right? अब उसके बाद क्या किया है? We have removed the spaces from the name. Why are we doing this? Basically, want to find what is the number of spaces in each name. Because अगर आपको number of spaces पता चल जाएगा ना, you will be able to find out कि उसके अंदर total नाम कितने हैं. So for example, if it's 3 names, there should be 2 spaces. If there are 2 names, there should be 1 space. So जितने नाम होंगे उससे एक कम आपकी space होगी. Right? So that number of spaces is going to tell you कि कितने नाम आ रहे हैं उसके अंदर. For example, when you have 5 names here, you should have 4 spaces. ठीक है? So what we're doing here is we are removing the spaces from the name. And how do you do that? आपके पास एक और function होता है that's called substitute function. ठीक है? Substitute, as the name suggests, आप इसके 3 arguments होते हैं. ठीक है? So the first argument is
the text in which you want to substitute something. So that was A2 in this case. ठीक है, मतलब वो जब first cell था जिसके अंदर पूरा नाम पड़ा हुआ था, उसके अंदर से we need to substitute something. So that's where we start from. And then old text, what do you want to substitute? And new text, what do you want to change it to? आपको change करके नया text वहां पे क्या डालना है? So what we are doing here is we are saying the old text was space and the new text in place of that is nothing. So inverted commas आपने बस दो डाल दी, it's empty. So spaces को वो basically eliminate कर देगा. ठीक है, there's a fourth argument there as well that's called instance number. Instance number जो है वो बताते हैं कि आपको उस स्पेस का कौन सा इंस्टेंस चेंज करना है, मतलब फर्स्ट स्पेस को चेंज करना है, सेकंड को चेंज करना है, थर्ड को चेंज करना है. अगर आपको सारे चेंज करने हैं, यू लीव दैट एम्प्टी. ये जो फोर्थ आर्गुमेंट है, we haven't input anything there. अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्पेस सिर्फ करना होता तो you could have given the instance number there as well. लेकिन अभी हमें पता ही नहीं है कि स्पेसेस कितने हैं. अगर पता चल जाए उसके बाद तो हम कुछ कर सकते हैं. अभी तो हमें ये फिगर आउट करने के नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं. ठीक है, so what we do here is we remove the spaces from the name and then we find the length of that name again. So after we have removed the space or all the spaces, we find the length of the name again. ठीक है, ये हमारे पास एक और कॉलम आ गया जिसमें हमारे सारी लेंथ्स लिखनी after removing the spaces. All right, and then you're able to find the number of spaces. How? By subtracting the length of the full name. In fact, subtracting length after removing spaces from the length of the full name. Okay, so length of the full name minus length after removing spaces, that's going to give you the number of spaces you have. ठीक है, अगर आपने spaces remove कर दिया, उसके बाद जो length है उसको आपने original length से subtract किया तो आपके पास number of spaces आ जाएगी. So now this tells you आपके पास कितने spaces थे in total. Is this clear until here? तो सिर्फ एक और step हमें करना है and then we're done. Does this make sense? Any questions here? No? I can't really hear anyone. Sajid Sahib, are you saying something? Yes. Yes, sir. Everything is clear, but I was thinking that we can only ask you question if we do a practice afterwards. So that would be helpful to make it understand more. Otherwise, Yeah, it's clear. so What you have said, it's clear. okay, all right. So by the way, I should have reminded at the start as well. So I uploaded the last session on Classroom yesterday as well. आपको वो उसके recording भी मैंने वहाँ पे upload कर दिया. And after today's session, you have to basically upload all this that we're doing here on Classroom as well. So as I said earlier, you had to follow what we're doing here and replicate at your own end as well. That was to ensure that you have enough practice on this. So at the same time, I'm also actually creating the assignment tab there where you have to do the submission. So session 5 or 6, जो है, you have to submit it on Classroom. ये जो हम कल जो हमने किया था और आज हमने किया था, you have to make sure you're following everything here. You're doing it on your end as well, और आपको ये file end पे submit करनी है on Classroom, and this will be counted as your lab work. So it's really important that what we're doing here, you should be following at your own end as well, and not just listening to it like this. वरना फायदा नहीं होगा. You're absolutely right about this. You have to make sure whatever we're doing, you're replicating this at your end as well. तो आपको ये सारी चीजें खुद से भी साथ-साथ करनी है. So that's why I'm asking, अगर आप खुद करते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी चीज के अंदर,
So let me know at that point. Okay, so I've just created the tab as well where you're going to do the submission. You have time until tomorrow night for this. So if you've missed out something, you can also go through the recording and do it again. But you have to submit it. Yes, please give time till Tuesday, sir. Tuesday night. You're supposed to do in the class. Sorry, I did. वो है कि बस if thing that you missed. जी sir, sorry, I missed your. Sir, I'm really sorry I missed you. I didn't heard what you have said. I was requesting that please give time to submit this assignment till Tuesday midnight instead of tomorrow. Okay, we can do that. Thank you. Can I add something, sir? Ji Hassan. Hassan, you are on mute. सर मैं कह रहा था कि आप इसको कल शाम तक सबमिट करने का क्यों कह रहे हैं, आप बाय ट्यूसडे क्यों कह रहे हैं, मतलब व्हाई नॉट बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये काफी थोड़े से डिफिकल्ट फार्मूलाज हैं एंड प्रॉब्ली वी नीड फ्यू डेज टू प्रैक्टिस दीस थिंग्स एंड देन टू सबमिट दिस होल एक्सेल शीट. तो ये एक दिन का काम तो नहीं मुझे लग रहा मेरे ख्याल में. No, this is actually this. So when we actually started yesterday, the expectation was that what we're doing here, you're trying to do it at your own end as well, साथ साथ. So आपको सिर्फ वही चीज हम कर रहे हैं, आपको सिर्फ कॉपी करके आपको बस सबमिट करना है, बस यही करना है और कुछ नई चीज तो इसमें कुछ नहीं करनी. आपको यही फाइल जिसमें आप काम कर रहे हैं यही आपको सबमिट करना है. एग्जैक्टली सर, बहुत सी चीजें देखने में बिल्कुल समझ आ रही होती है परफेक्टली, जो आप फॉर्मूलाज लगा रहे हैं वो प्रॉपर्ली कंसीव हो रहे होते हैं, लेकिन जब उसको आप कल मैंने कोशिश की थी 80-90% आपके साथ साथ ही कर रहे थे, लेकिन एट द एंड पे जाके जब फॉर्मूलाज लंबे हुए थे तो फिर आई लेफ्ट दैट, क्योंकि मेरी फिर वो नजर एक तरफ कंप्यूटर पे पड़ी थी, एक तरफ मैं मिस कर रहा था बहुत सारी चीजें. तो आज भी इसी तरह ही है, फॉर्मूलाज थोड़े से लंबे हैं तो वो समझ सारे आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है जब इसको हम स्टार्ट करने लगेंगे तो वो प्रॉब्ली बहुत सारी चीजें लॉजिकली, उसको जब एक ही चीज को हम 2 से 3 दफा करेंगे मुख्तलिफ तरीकों से तो वो प्रॉब्ली हमें स्किप हो जाएंगी चीजें. आई थिंक सो, मतलब इफ यू गिव टाइम तो इसमें कोई इशू तो नहीं है, अगर आप 3-4 दिन भी दे दें. वी हैव होल वीक बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट क्लास, हम बाय फ्राइडे इवनिंग तक हम करवा सकते हैं इसको. But you'll have the other assignment as well, जो आपकी probability के ऊपर assignment है, because I delayed that because आपको quiz था इस weekend के ऊपर, so I was expecting कि उसमें फिर problem आएगी कि deadline उसकी और quiz के साथ हो जाएगी. So you have the other assignment coming on probability as well, so that's going to be due next week. So that's ये lab works generally are going to be you are going to be expected to abhi istafa because there was some confusion there. I'm just giving an extra day for this, but generally iski jo expectation hoti hai, you have to submit it after the class. So after class, let's say you could have time until the midnight to just complete anything that you've missed. लेकिन generally आपको साथ साथ class के अंदर ये follow करना है. You have to replicate what we're doing, and at the end you have to submit it. So that's the whole purpose कि class में साथ साथ जो है you try it and wherever you've got issues आप उसको साथ साथ discuss करें. So that's what the expectation was supposed to be. I think there was probably some miscommunication at the start. मैं कल इसलिए मैं बार-बार कह रहे थे whatever we're doing here, you have to make sure आप साथ साथ इसको replicate करें. And if you have issues, you let me know at that point. Sure, sir. Yes, Mohsin and Ramsha. Sir, I just wanted an update on the assignment that you have to give. So, uski kab hogi deadline and when will we receive it? Considering we have a midterm MSM का next week, तो उस हिसाब से पूछ रहा हूँ. अगर अभी बता दें आप ताकि हम segregate कर सकें time. Thank you. It's not going to be a very long assignment. मुझे सिर्फ ये था कि मैंने practice questions probability के कुछ काफी upload किए थे और फिर quiz भी था, so I was just trying not to overburden you. So I'll try कि मैं आज upload कर दूं because आज will be done with the quiz. So you'll have 7 days after that. ठीक है, 7 days after the upload of the assignment. Okay, thank you, sir. And it's not going to be very long. It's going to be fairly straightforward.
Best. Ramsha, you wanted to say something? Sir, I also wanted to ask, when is the midterm for the quant course? There's no midterm for quant. Okay. So basically for quant, you have assignments and lab work, and that makes up for that part of the grade. Perfect, sir. And quizzes, of course. Yes, Ali? अस्सलाम वालेकुम सर. So I just wanted to ask कि हमारा next जो Saturday है उसमें जो mid है वो on campus है. So the quant lecture will be on Zoom. Just मतलब कि जो जिस तरह हो रहा है कि वो भी आपने कोई lab शेयर कराने के लिए Next week, I'm also planning to conduct it on campus. So that will be good. If we have a midterm on campus as well, तो हमारी class भी फिर on campus ही होगी, because it's going to be lab work. A lot of things that we have to do on Excel. So it will be actually better to have that on campus. So next weekend, I'm planning to have both Saturday and Sunday on campus. So by the way, did anyone have a chance to visit the campus during the classes अभी तक? आप लोगों की entry exit की कोई problem तो नहीं हुआ ना? So we came for the No, sir, first abhi tak course nahi hua. presentation. Actually, I used to be on campus during the weekdays, so I coordinated with the coordinator. So they make sure that there is no such thing happening. Okay. Yes, Ramsha, you were saying something as well. Alright. So we came to the campus during the first course, which was the orientation one, and for that I think Dr. Shazeb had coordinated for the entry and exit. Okay, all right. So I let the coordinator know as well, and there shouldn't be a problem. Saturday, Sunday, वैसे भी इतना issue होता नहीं है, so it should be okay. And were you able to park your vehicles inside? या आपको बाहर खड़ी करनी No, sir, we had to park them outside. So can that be solved? Because that's always an issue. Bahar Yes, parking sir, में मिलती है. please. Yeah, so that has been an issue. Unfortunately, the admin of the whole building is like that actually. So we can't really. So ITU is just a part of the whole building, and they have some rules, and we can't really bypass them. Faculty को भी start में काफी issues होते थे. काफी मुश्किल से हमारा issue resolve हुआ है, लेकिन students के लिए since last year they have been causing some issues. तो वो एक problem है that unfortunately is not in our hands. So because Dr. Ateek is very strict on timing, और सुबह अगर आओ there's no parking, and he's like doesn't mark वो बड़ा absent mark कर देते हैं. अब weekend को सुबह उठ के आना भी mid और फिर अंदर ना घुसने का मसला है ये. So वो 1 मिनट का grace period भी नहीं देते हैं. Okay, so it's an MBA, so he just tries to make sure you learn that skill as well, to be punctual, to be on time. Sir, corporate meetings में भी 10 मिनट का grace period मिलता है. सर पे यही है कि वीकेंड पे सुबह गोगे पे नाश्ता करे आके और 7 बजे पार्किंग ढूंढ ले आके. यही बन सकता है फिर. हाँ, ये हो सकता है, लेकिन सैटरडे संडे वैसे भी पार्किंग का बाहर तो कोई इशू नहीं होता, बाहर तो आप आराम से कर सकते हो. सर लास्ट टाइम when I came was संडे को नहीं होता, सैटरडे को होता है. इस बार पैक because PITB मेरे ख्याल से वहां पे it's on Saturdays. Yeah, Sunday there is not an issue, but on Saturdays yes there is. Okay, it might be an issue now, but because earlier Saturday, Sunday, both days बाहर कोई issue नहीं होता था. So yes, then in that case we need to have a margin of at least 5 to 10 minutes, and just to ensure you don't get marked absent. But yeah, so that's generally how it works in MBA. I tend to be a bit relaxed, but I shouldn't be as well, so I can't really say anything about that. What the other instructors are doing. If you have heard somebody from LUMS,
They have this ice cream rule there in their MBA classes, and if anybody is late by, you know, even a few minutes, they get to, you know, they have to sponsor an ice cream for everybody in class. So इस तरह के rules हो सकते हैं. So it's only, you're only marked absent, so you're being spared. Sir, I think so. We shouldn't have told you about Sir Atik's strictness, because आपकी ही relaxment से तो हम थोड़ा सा उधर थोड़ा time दे पा रहे थे उनकी जो assignments को और readings को. If you would do the same strictness, then probably it would not be possible to manage both the courses. Attendance में तो as in time management, as in joining class at you know, after a couple of minutes, generally I don't penalize that as much. Lekin the workload is generally going to be higher in the last part of the course, because आपकी assignments जो हैं, now they're going to be assignments every week, because start में हमारी assignments हो नहीं सकती थी because we had not covered a lot of things. But now every week we're going to have assignments, we're going to have quizzes, but still, since there are not going to be many readings, आपका workload उतना नहीं होएगा जितना probably Dr. Atik के courses का होता है. His courses are generally designed this way के उसमें case studies बहुत ज़्यादा होती हैं. लेकिन the last 2 weeks on this course, they should not make you think कि इसमें कोई आपका workload नहीं होगा, and it's going to remain the same. And in the next 3 weeks now, the workload is going to increase, and you should be prepared for that. Okay, so yeah, so just keep that in mind. Okay, every week there are going to be assignments, and almost every weekend there's going to be a quiz as well, or per end pe final yoga in the 12th session. So it's not going to be the same anymore. So you have to be on your toes for this course as well now. Okay, so हम यहाँ पे ये discuss कर रहे थे. We don't really have a lot of time today as well. We have to have a quiz at the end, so we want to cover this today. So we started with this. We were at this point where we had found the number of spaces that we had in each name. ठीक है, जब आपने वो find कर लिया, the number of spaces, अब आप उसके बाद क्या करते हो? आप find करते हो कि last space जो है वो किस position के ऊपर है. ठीक है, अब आपको अब the problem is to find the position of the last space. अगर आपको last space की position मिल जाए, then it's fairly straightforward after that. आप वही apply कर सकते हो आपने पहले किया था. You could you know, just subtract the position of the last space from the length of the total name to find the length of the last name. ठीक है, तो अब आपके पास problem ये है कि आपको last name की last space की position find करनी है. ठीक है, now since find does not have, the find function does not have any argument or any input, कि आप उसको बता सको कि आपने जो है इतना instance number उठाना है. For example, if there are 4 spaces, you cannot tell the find function or the search function कि आपको 4th space जाके उसकी position बतानी. You cannot do that there. ठीक है, find function के अंदर ये flexibility नहीं है. However, what we can do is हम ये कर सकते हैं कि आप space, जो last space है ना, उसको आप किसी ऐसे character से replace कर दो that you would not expect would come in a name. So for example, one such character is this tilde, right? You could have other characters as well. You could have, you know, a $sign, a hashtag or something like that that you would know for sure is not going to appear in a name as such. ठीक है, so one such character is tilde. तो हमने क्या किया, हमने substitute function को use किया to replace the last space with tilde. And how do we do that? How do we tell the substitute function to replace the last space with tilde? So again, look at the arguments that we have. So we've got A2, so that was where we had the full name. So A2 के अंदर we've got the full name there. The second argument, the second input is you replace the space. हमें space को replace करना है किसके साथ? tilde के साथ. लेकिन कौन से space को? Are we going to replace all spaces? अगर हम सारे spaces को replace कर देंगे, then it doesn't help at all, because आप फिर tilde की position में find नहीं कर सकते, because there are going to be multiple tildes. आप जो find करोगे, आपको first tilde ही return करेगा. So what you do is you
replace the last space using the number of spaces that you had found there. So last argument जो होता है ना यहाँ पे substitute का, that's an optional argument. You can tell कि in कौन सा instance उस character का आपको replace करना है, right? So if there are 4 spaces, for example, what you could do there is you could say replace the 4th instance of the space with tilde. So अब h9 जो argument है यहाँ पे क्या आ जाएगा, as in जो last argument है यहाँ पे ये h9 replace कर देगा, जिसकी value 4 है. इसका मतलब 4th instance आप उस space का tilde से replace कर दो, ठीक है? So what happens in that case is, अब देखें सारे नामों में क्या हुआ है, the last space जहाँ पे आ रही थी ना, जो भी last space, for example in this name the last space is here, the last space is changed by this character tilde. And once you do that, आप सिंबल उठा रहे हैं, ये सिंबल से उठा रहे हैं सर टिल्डा जो है, ये जो it's on your keyboard. आपके पास when we've got numbers ऊपर escape के नीचे वाले बटन में देखें, you should find that there on most keyboards. yes okay it's So over there. You can use any symbol that is not expected to come in a name, right? You could, there are many such symbols, right? आप hashtag use कर लो, आप less than greater than sign use कर लो, आप question mark use कर लो, dollar sign use कर लो. So this is just one possibility. Okay, so you want to replace with something जिसको आप बाद में उसकी position find करके आपको पता चल जाए कि आपके last name के characters कितने हैं. So what we can do after that is, now after that is fairly simple. अब वो वही वाला method जो हमने पहले apply किया था, now you can apply that again here. आप क्या कर सकते हो, आप ये tilde की position find कर लो और उसके बाद टोटल लेंथ में से जो आपके नाम की टोटल लेंथ है उसमें से इस टिल्डा की पोजीशन को माइनस कर दो, you'll get your last name की लेंथ आ जाएगी, अब राइट फंक्शन यूज कर लो and you'll get that. ठीक है, does that make sense? So it's a fairly complicated function जिसको हमने इस तरह break down करके we're able to understand how it's working. So अगर आप इसी को इसी तरह देखो ना, if you go to if we have this active and we go to the formulas tab and we go to evaluate formula, we can see exactly how this is working here, right? So we start from A2, आपने A2 evaluate किया. So if you look at the screen, आपने A2 evaluate किया, उसमें मोहम्मद अजहर लिखा हुआ आ गया, तो दोबारा A2 ये वाला evaluate किया, वो अजहर लिखा हुआ आ गया. उसके बाद वो क्या कर रहा है, अंडरलाइन कहाँ पे है, so length of मोहम्मद अजहर उसने वो फाइंड की. देखिए अब स्टेप बाय स्टेप जो मैंने यहाँ पे सारे स्टेप शो किए ना, सो देखिए स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से उसी सीक्वेंस के अंदर जाएगा. सो वी ट्राइंग टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस नेम, दैट्स मोहम्मद अजहर. लेंथ के आगे आपके पास ये 14 आ गई लेंथ, राइट? एंड नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, उसने सब्स्टिट्यूट फंक्शन के ऊपर चला गया है, पहले A2 इवैल्यूएट कर रहा है, A2 टर्न्स आउट टू बी मोहम्मद अजहर. उसके बाद ये लेंथ वाला A2 इवैल्यूएट किया है, वो भी मोहम्मद अजहर आ गया. अब लेंथ ऑफ फुल नेम अगेन, और फिर क्या किया उसने, अब सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यूज करके यहाँ पे क्या कर रहा है, मोहम्मद अजहर में स्पेसेस को रिमूव कर रहा है. ठीक है, स्पेसेस को रिमूव करके उसने उनको खत्म कर दिया. सो इट्स लाइक दिस, मोहम्मद अजहर विदाउट अ स्पेस नाउ. ठीक है, एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट इट डज इज इट कैलकुलेट्स the difference of the original name की length and the length after removing the spaces. That's 14 minus 13 in this case. इसको अब दोबारा करो, इस तरह देखें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वो पता चल रहा है कि हर स्टेप के ऊपर क्या हो रहा है. So now at this point what we're doing is we are going to replace the spaces that we had, the last space that we had, with this tilde. आपने space को tilde से replace कर दिया, and then it's fairly simple to find the position of tilde. now आपको tilde की position मिल गई, that was 9, और आपने total length में से उस tilde की position को subtract कर दिया, and you get your final name. That's the last name, that's Azhar, like this, right? So you can go through it, you can try to do it yourself. आप evaluate formula पे देखें step by step वो क्या कह रहा है, and you can try to understand the formula like this. ठीक है, and once you're able to understand this, आप इसको फिर अगर आपने कहीं से भी लिया है, you will be able to apply this in your particular case. और आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ और अगर आपको कुछ इसमें से आपको मॉडिफिकेशन करनी होती, थोड़ा और कस्टमाइज करना होता,
Once you understand the whole function, you can probably tweak a bit and figure out कि आपको अपनी exact problem किस तरह से solve करनी है. ठीक है? So this is a very important skill to be able to understand complex functions and modify them and use them for what you want them for. ठीक है? Is that clear? Is that okay? So ये इसमें आपको submission के लिए इसमें कोई requirement नहीं है. The only thing was we wanted to understand what's happening. कि इसमें आपको खुद कुछ नहीं करना था यहाँ. ठीक है? Of course you can try to experiment it. You experiment with it yourself. Try to understand it yourself. लेकिन submission के लिए lab work के submission के लिए आपको यहाँ पे खुद से कुछ नहीं करना. ठीक है? लेकिन जो first 4 sheets थी यहाँ पे, whatever we did yesterday, you have to do it yourself as well. आपको ये functions खुद से apply करके you have to make sure you submit it on Classroom and it's going to be counted as your lab work. ठीक है? Lab work के grade जो है आपका basically free का grade है. You just have to follow what we're doing here and that's it. आपको तो सिर्फ copy करना है, replicate करना है what we're doing. So आपको ये आपने आसान कर दिया सर, सेग्रीगेट करके, यानी कल तक का वर्क जो है वो आपको सबमिट करवाना है. नहीं आज जो कर रहे हैं वो भी करना है. मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, कल वाला अगर आपने नहीं किया अभी तक फॉलो तो वो आप उसको आप कंप्लीट कर लें. आज जो भी कर रहे हैं वो तो यू हैव टू फॉलो साथ साथ. ये सर इसमें एक चीज है कि जो आपने फॉर्मूला लगाया है अभी, एक्सट्रैक्टिंग डिफरेंट नेम्स फ्रॉम लॉन्ग नेम्स और लास्ट नेम आपने उसको करना, always we have to do by segregating this multiple formulas on the sheet and then we can find this, or we can go with the formula at the first go. So that this is just for explaining. ये मैंने सारी सिर्फ मैंने आपको explain करने के लिए बनाया है. You don't do it in an actual thing. आपके पास ये formula बस एक sheet के अंदर आपके पास ये full name है. You just apply that formula here. ठीक है? Once you're able to understand what's happening, you just use it in one single cell and you just apply it here. वो सिर्फ मैंने explanation के लिए सारे कुछ बनाए हैं. उसकी जरूरत नहीं है. All right. Okay. Now let's come to something that's again a very, very useful function that I'm sure anybody who's worked with data in Excel, they would have come across this, even if they don't understand this. अगर आपने कोई भी worksheets देखी हो आपने, उनमें formulas कहीं पे लगे हों, VLOOKUP is something that's very common and everybody basically needs to know about this. अब इसमें कुछ जो है वो complications भी आती हैं, वो भी discuss करेंगे, but let's start with the basic idea first. Okay. Now, VLOOKUP का एक general basic idea ये है कि आपके पास data है that's in different tables, right? आपके पास 3-4 different tables हैं. You could have more than that, which you generally do when you have large data sets. And what you want to do is you've got data in one table जिसके अंदर कोई column आ रहा है, and you've got data in another table जिसके अंदर कुछ column आ रहा है. You want them together. ठीक है, आपको उनको combine करना है, या फिर एक table से कोई column उठा के आपको दूसरी table के अंदर लेकर आना. ठीक है? How do you do that? So a lot of people who do not know about this, they would, if the data is small enough, they, do it regularly manually. That's not, efficient, and that's not even possible when the data is, even as big as, just about a few hundred rows. You cannot do that anymore. So there's a function for this that's called, there's actually a set of functions for this that's called the lookup functions. And the most common one amongst them is the Vlookup function. It's going to get a vertical lookup. This works when you've got tabular data like this, जहाँ पे variable names आपके पास ऊपर होते हैं in the first row there, और नीचे you've got data like this in columns. And that's generally the standard format of any data that you'd look at generally. अब इसमें क्या है? Let's say you have so it's a very small subset of let's say a large data. Let's say you've got a shop in a fee center. Let's say you had a shop in a fee center. Unfortunately, now the situation has changed. Let's say आपके पास जो है एक shop थी a fee center के अंदर. You are selling different products. You're selling TV. You're selling laptop, tablet, keyboard,
and so on. You've got other products as well, but this is just a subset of products that you have. And what you have is you've got the product codes there, TV, LT, TL, KB. आपने ये product codes assign किया है, let's say, and each of those products has a certain price, and you also have the costs there that you have for them. Now this is another table in which you've got the orders that you receive. Okay. Now this is something standard जो आपने एक table के अंदर अलग से रखी हुई है. So for example, if the price for a product changes, आपको सिर्फ क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ यहाँ पे इसको update करें, and everything else should be updated automatically, right? Now आपको invoices create करनी है, let's say, ठीक है, and don't have any proper system for that, you're doing it yourself. तो आप क्या कर सकते हो? You've got this stock data in one table. इसमें आपके पास सारी information है, product codes and product name है. You've got the price of the product, you've got the cost of the product, and this is where you're getting the orders, right? आपके पास orders की information. You've got an order for laptops, 125 laptops. Let's say you've got corporate customers who are selling to. आपके पास laptops का order है, they need 125 laptops. Let's say आपके पास एक ही brand है, so we're simplifying the problem for now, and you're selling all of them for $245, sorry, $185 each. It's a fairly cheap laptop, and what you want to do is, आपके पास कोई order आए, so you don't want to be noting down all that information. आप इसमें हर order पे आप ये लिखेंगे laptop का order है, ये quantity है. You don't want to be writing name there yourself. You don't want to be writing the price there yourself, and you don't want to calculate the total price after that yourself. So ये चीज आपको automate करनी है, because you have to input the least amount of information. आपको जो manual input करना पड़ेगा वो minimum होना चाहिए. So what could be one possibility for that? आप codes पता है, you could just input the code there. For example, you could input the quantity, because that's the information that you've got from your customer. अब जो बाकी information है जो आपकी अपने data से आ रही है, you can actually extract that from that data. You can fetch it from that data automatically. अब इसका क्या तरीका होता है? This is that case where you have to basically fetch data from another table, right? अब इसके लिए एक requirement होती है that you have to have one column that is common between the two tables, right? For example, in this case, you've got the codes here, and you've also got the codes in the other tables. Generally, ये जो column होता है, it's generally a unique column in the first table. ये repeat नहीं हो रहा होता, because TV एक product code है. इस code के against you cannot have let's say multiple product names or multiple prices. इस code के against एक ही आपके पास ये चीजें होनी चाहिए. Of course, if you've got multiple brands, आप उनके codes को इस तरह से रखोगे कि code के अंदर वो brand name भी आ जाए, और brand के अगर कोई specific model है, तो वो भी वो सारा आप उस code के अंदर वो incorporate कर लो, and then your code will be unique, for instance. या भी आप ये भी कर सकते हो, you could have multiple columns और उनको combine करके कि unique चीज बन जाए. For example, you could have a TV in one column, you could have the brand in another column, you could have the model in another column, और उन तीनों को combine करके आपके पास एक unique combination बन जाए. ठीक है? That's not what we are interested in right now. या MIS से पढ़ेंगे, तो you'll study these things, how to have tables that have some primary keys and so on, unique keys. These MIS में पढ़ेंगे बाद में. But for now, what we want to do is we want to fetch the product names from the other table. Okay. अब इसके लिए आप क्या करते हो? You use this function that's called the lookup function, the Vlookup function. Okay. अब ये क्या करता है? It has 4 arguments, right? So you can see the arguments there. You've got the lookup value, and you've got the table array, column index number, and the range lookup. ठीक है, बस ये 4 इसके जो है arguments हैं. The last argument is actually optional. By default वो उसको एक value assign कर देता है, लेकिन आपको उसकी value generally input करनी होती है यहाँ पे, and we'll discuss why that is the case. Okay, so the first argument is the lookup value. Lookup value का क्या मतलब है?
लुकअप वैल्यू का मतलब ये है कि आपको इस टेबल में से कौन सी चीज जाके दूसरी टेबल में सर्च करनी, राइट? सो व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू pick LT from this for this particular row. आप क्या करना है? You want to pick LT. You want to go to the other table. You want to search for. So basically आपको इसका बता रहा हूँ कि what is really what we want to do here. हम name कैसे fetch करेंगे? आप LT यहाँ से उठाओगे. You go to the other table. You'll search in this column and the product code column. You'll see कि अच्छा LT आपको कहाँ पे मिलता है. You go to the first row. You don't find that. You go to the second row. That's where you get it. LT आपको मिल गया. LT के अगेंस्ट आपको क्या करना है? प्रोडक्ट नेम यहाँ से उठाना है और वहां पे लाके इनपुट कर देना. That's what you want to do, right? So lookup function actually works like this. You pick up this LT from here. इसको हम कहते हैं lookup value, right? So the lookup value in this case is going to be LT. So you input this, right? So that's your lookup value. Do you want to fix this? इसको fix करेंगे या नहीं करेंगे? Any ideas? Yes, sir, we need to fix. Next वाले को fix करेंगे, इसको नहीं. सर इसको हमें fix करना पड़ेगा because if you're going to use the same, if you're going to copy the formula and if you don't fix it, तो वो G12 की जगह जब आप J column में जाएंगे तो वो H12 हो जाएगा. So you need to lock the G column in this formula for the lookup value because G column is the one that is the unique column. No sir, we will not lock the G column. Instead लॉक सर प्राइस को करेंगे सिर्फ, जो प्राइस है क्योंकि वो एक दफे ही आ रही है तो उसको वहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा. LT जहाँ पे लिखा है उसको हमें लेना होगा, जहाँ पे LT लिखा हुआ है. अगर 4 दफा लिखा है तो वो आप कैसे लेंगे? That's what I don't know. So we need to lock the A column instead of this G column. सर G12 लॉक नहीं होगा, सर ये ओपन रहेगा फ्री फ्लोट. तो वैल्यू को नहीं करना पड़ेगा फिक्स. Okay, so basically you're all right, and Ramsha was also right. Lekin she was actually talking about something that we have not discussed, Abhi. That's called mixed referencing. But khair, we will not go into that detail, Abhi, for now. Abhi, can you just focus on the Vlookup function, and then in a few minutes I'll come back to what Ramsha was suggesting there as well. For now, let's say आप इसको fix नहीं करते, right? And that's what most of you are saying, because we don't fix it because हम जब नीचे move करेंगे, we want to move to TL, KB, LT and so on. अब नीचे move करेंगे तो ये सारा code भी नीचे move करना चाहिए, ठीक है? So what we can do here is we can have G12 here as it is, and then we need the table array. Table array में आपको क्या input करना है? Table array में you want to input this table जिससे आपको value उठानी है. जिस टेबल से आपको वैल्यू यहाँ पे इनपुट करनी है उसको आप डालेंगे आप, ठीक है? And now this table needs to be fixed. यहाँ पे आप F4 प्रेस करोगे because when you move down you don't want this table to move down with you. टेबल तो फिक्स रहेगा, वो नीचे इसको आपने साथ साथ नीचे मूव नहीं करना. That's why you fix this, ठीक है? That's the second argument कि किस टेबल से आपको जाके वैल्यू उठानी है, ठीक है? That's called table array. Now the third argument is the column index number. आपको जिस उस टेबल से कौन सा कॉलम चाहिए. So you want the name here. So what you want to do here is you want to pick up the product. You want to pick up the second column from that table. अब देखिए first column में तो product code थे, second column में product name था, आपको second column वहां से pick करना. So we input 2 there. And then the last argument is true or false. In most cases आपको exact match ही चाहिए होगा, and the approximate match function here, the approximate match argument here actually works in a way that's not very intuitive. हम वो भी discuss करेंगे, उसका एक special उसका use होता है, but other than that you're always going to use false there. आप हमेशा यहाँ पे exact match use करेंगे because generally आपको exact match ही चाहिए होगा, ठीक है? So आप हमेशा यहाँ पे fourth argument डालेंगे false. ये जरूर डालना है आपने because by default if you skip this argument, क्योंकि optional argument है, आप उसको skip करके आपका function will still work. लेकिन if you do skip that, इसकी default value true होती है, ठीक है? So Excel इसको true assume करेगा अगर आप इस argument को skip करेंगे. And that's good. You're going to run into some problems. आपका Vlookup function will not be working correctly and you will not be able to figure out कि क्या मसला हो रहा है. वो मसला ये होगा कि आपने यहाँ पे ये argument miss कर दिया होगा because the default value true होती है. So that's something you need to remember. Last argument आपने false डालना है जब आप Vlookup को इस तरह से use कर रहे हैं.
close the bracket, you press enter, and you can extend the formula now. आपके देखिए सारे populate हो गए, right? So TL के साथ आपके पास tablet आ गया है, KB के सामने आपके पास keyboard आ गया, and so on. You've got all the product codes that you needed. ठीक है? ये सर टेबल फ्रीज करने के बाद जरा दोबारा बता दें ट्रू और फॉल्स वाला पॉइंट। The last argument, जब last argument जाएगा ना तो दो options हैं। इसके last argument में दो values आ सकती हैं, either true or false। देखिए true का मतलब यहाँ पे होता है approximate match, कि LT का approximate match उसको मिल जाए उसके अंदर तो आप वो input कर दो, और false का मतलब होता है exact match। ठीक है? For now, I'm saying you should always use an exact match। ठीक है? आपको approximate match जो है वो नहीं चाहिए होता इस तरह के केसेस में। आप एग्जैक्ट मैच को ही यूज करते हो हमेशा। आपको हमेशा यहाँ पे क्या करना है, फॉल्स यूज करना है। ठीक है? और जो दो लिखा हुआ है आपने वो किस वजह से लिखा है? जो दो लिखा हुआ है सर, टू फॉल्स से पहले जो टू। फ्रॉम द अदर टेबल व्हाट डू वी वांट टू पिक अप? हमें एक्सेल को बताना है ना कि हमें तो प्रोडक्ट नेम चाहिए वहां से। अब प्रोडक्ट नेम उस टेबल के अंदर कौन से कॉलम के अंदर आ रहा है? इट्स कमिंग इन द सेकंड कॉलम। So that is the column index number कि आपको कॉलम का कौन सा, उस टेबल का कौन सा कॉलम उठाना है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। So we need the second column from there. Okay, all right. Now अब ये जो शीट है ना, it's very very important. So please make sure you focus here. इसमें हम कुछ चीजें ऐसी करेंगे that are going to get a bit complicated. You have to make sure you are paying attention there and you're also following what we're doing here. So we've got false here. हमने इसको populate कर दिया. Yes. Yes, Hera. सर अगर हम टेबल से ये ले रहे हैं, हमारे के सेकंड कॉलम ले रहे हैं, तो वो टेबल बी टेबल को हम कॉलम को बी नहीं देंगे अदर देन टू? वो प्रोडक्ट नेम। अच्छा, एक कॉलम इंडेक्स नंबर है बेसिकली। ठीक है? इंडेक्स नंबर ना बेसिकली ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। सो आप इस टेबल के अंदर स्टार्ट करोगे फ्रॉम द लेफ्ट। आप जो भी आप ये ऊपर वाला कॉलम जो है ना, ये लेटर ये मैटर नहीं करता यहाँ पे। ये जो आपने टेबल लिया है ना, उसके अंदर आपने देखना है इसके टोटल कॉलम्स कितने हैं। 4 कॉलम्स हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उस टेबल में से आपको सेकंड कॉलम चाहिए तो आप वहां पे वो नंबर लिख दो। ठीक है? ऊपर वाला कॉलम जो लेटर है दैट इज इररिलेवेंट, दैट्स नॉट रिलेवेंट देयर। ओके। Now the second thing we need there is we need to get the price from there as well. ठीक है? अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो? You can actually just copy that whole formula. अच्छा, एक तो ये तरीका है कि आप इसको इस तरह से कॉपी कर लो, like this. ठीक है? आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया। Now the only problem is यहाँ पे आपको सेकंड कॉलम की बजाय बाकी सब कुछ सेम रहने दिया। G12 is the value you want to look up. The same table you want to extract it from, you want to fetch it from. But the third argument here, आपको price चाहिए। price कौन से कॉलम के अंदर है? सेकंड नहीं, वो थर्ड कॉलम के अंदर है। तो आपको इसको 2 का आप रिप्लेस कर दें बस 3 के साथ, and that would work. आप इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है? आपने नेक्स्ट के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, 2 को रिप्लेस कर देना है 3 के साथ, and then it will work. Is that okay? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Achha. Now, there's one problem here that you would encounter. That is when you are, for example, working on a big data set जहाँ पे आपको let's say 5-6 columns के अंदर information input करनी है। So what you do in that case is, or in fact, let's say 10-15 columns के अंदर information fetch करके आपने डालनी है from another table। तो आपको हर column में जाके ना value बार-बार input करनी पड़ती है। So that's a problem that you do encounter here. तो उसको solve करने के लिए we can see what we can do here. So let's try and have a look.
अब यहाँ पे जब हमने यहाँ इधर कॉपी किया ना इसको, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ये एक सेल में इंफॉर्मेशन डालता और मैं पूरे के ऊपर कॉपी करता, देखिए उस केस में क्या होता। अगर मैं नीचे भी कॉपी कर लिया यहाँ पे और राइट साइड पे भी कॉपी कर लिया, व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये सारे एरर्स क्यों आ रहे हैं मेरे पास जब मैंने इसको राइट साइड पे कॉपी किया? इट्स बिकॉज मैंने G12 को फिक्स नहीं किया था, है ना, G12 को फिक्स नहीं किया था, इसलिए when I'm moving right तो वो G12 जो है वो भी H12 पे आ गया, है ना। टेबल तो फिक्स किया हुआ था, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। टेबल मैंने फिक्स किया हुआ था तो वहां पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, दैट रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम। लेकिन जो G12 था दैट हैज आल्सो मूव्ड टू द राइट। नीचे तो मुझे मूव करना चाहिए था, नीचे जब मूव करता हूं तो वो नीचे जाना चाहिए था, दैट वाज वर्किंग फाइन। लेकिन जब मैं राइट पे मूव करता हूं, वो प्रोडक्ट कोड जो है दैट शुड नॉट मूव। राइट साइड पे राइट लेफ्ट मूव नहीं करना चाहिए, उसे नीचे ऊपर मूव करना चाहिए, लेकिन राइट लेफ्ट पे वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए there's actually a method that Ramsha was basically suggesting पहले। We have something that's called mixed referencing। जब आप देखिए आप F4 प्रेस करते हैं ना, you press F4 like this, you get $2 signs there, yeah? You get $1 sign before the column letter, and you get $1 sign before the row letter, row number. What you can also do is you can just fix one of the two. You can just say I want to fix the column कि column change नहीं हो, but the row can change. Or I can say I want to just fix the row or column change हो जाए. So you have both those possibilities as well. So अगर आप F4 एक दफा और प्रेस करें ना, देखें क्या होता है। It gives you only $1 sign that's before the row number. अगर आप एक दफा और प्रेस करें क्या होता है? It gives you only $1 sign that's before the column letter. Basically आपके पास तीन possibilities होती हैं. You can fix both rows and columns like this with $2 signs. You can fix only one of the two, either the row or the column. ये आपकी choice होती है. आप खुद से जैसे डॉलर इनपुट आप इसको लिख भी सकते हो और F4 multiple times press करो, that will also work. So in this particular case, what we want to do is, जब हम ऊपर नीचे मूव करें, तो हमारा प्रोडक्ट कोड हमारे साथ साथ मूव करता रहे, ठीक है। That means रो चेंज होती रहे, रो ऊपर नीचे चेंज होती रहे। However, when you move right like this, अभी प्रोडक्ट कोड को राइट पे नहीं मूव करना चाहिए, ये तो उसको वहीं पे रहना चाहिए। G12 H12 नहीं होना चाहिए, it should remain the same. So what we can do in this case is we can say we only fix the column here, basically dollar sign आप डाल दो column letter से पहले। अब उसने G को फिक्स कर दिया, लेकिन रो जो है, रो पहले 12 थी, अब वो नीचे मूव कर सकती है, वो फिक्स नहीं किया, ठीक है। This is called mixed referencing, that you only fix one of the two, either the column or the row. अब इसमें क्या होएगा? When you input the formula like this, just fixing the column and not the rows. When you move it down like this, आपने नीचे कॉपी किया, आपके देखें प्रोडक्ट कोड चेंज होता जा रहा है। But when you move right, आपका प्रोडक्ट कोड वहां पे नहीं चेंज हो रहा, है ना। यहाँ से आप नीचे करेंगे तो नीचे चेंज होता जाएगा। You got this working right, ठीक है। The only problem is आपको जाके कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा सर, and the rest works fine. कॉलम नंबर आपने चेंज कर दिया and then it's okay. So now you could copy the data in all the columns. आप सिर्फ कॉलम नंबर्स चेंज करें and you'll be able to apply it to all the columns that you need it for. अब प्रोडक्ट वो जो कॉलम नंबर है उसको भी ऑटोमेट करने का एक तरीका होता है, that will do it some time अभी as well, ठीक है। For now अभी हम ये input manually कर रहे हैं 2, 3, 4 and so on. So this is one way to do it, right? If you've got small data set, आपको सिर्फ one time कोई चीज करनी है, you can just do this and that should work.
लेकिन अब कोई आपको repetitive process है, you have to do it, monthly or weekly, तो उसके अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े बार-बार. That's how to do this. But for now, is this clear? How Yes, sir. Yes. Any questions on this? No. Okay, just remember, it's so a reminder again. It's important that you're following what we're doing here, because you have to submit it at the end. And I don't think I need to say this, but I should not see any duplicate assignments from different people. So this happens sometimes, more with the bachelors, but I'm sure our EMBITE students are much more mature, so I won't see anything like that. But just keep that in mind. So you have to make sure you are following this here, and let me know if you have any problems. Okay, so is the Vlookup function clear? Any issues? Is my voice breaking, or is this okay? Because कभी-कभी दरम्यान में मेरे Wi-Fi signals काम हो रहे हैं. Is my voice clear? दरम्यान में Was it, sir, it breaks in the middle. At times it breaks in the middle. Okay, so has it been happening since the start? No. अभी हुआ. Acha. Let me actually check. Okay, I think it should be, it should hopefully be better now. Okay, so we were here. We were done with this. Okay, so this is how the Vlookup function works. You can extract information from another table and input it here like this. Now, what if you had to put the other way around? So I've got a table here, and what I want to do is I want to get the product codes given that I have the names of the products. I've got the laptop, I've got these names here for laptop, television, and keyboard, and I want to extract the product code and price from that table. So take a minute to think about this, try it yourself, and see if, and let me know if you're able to do it. Raise your hand once you're done, and I'll ask one of you then. So take a minute, try this yourself, and let me know what to do. So take a minute. I'll give everyone some time to think about this, and then we'll discuss. So can you repeat the question statement? Your voice was breaking, sorry. Okay, so basically we've got this table now in which we've got product name, the product code, and the price. You've got the product names given. You want to fetch the product code and price from that table now. Okay, fair enough. So you've got a minute to think about this and let me know what I should do then.
All right, so any suggestions? What should we do? Okay, so yes, Muhammad Mughal. Yes sir. Same formula होगा, G2 की जगह A22 आ जाएगा और कॉलम नंबर की जगह 1 आ जाएगा. लुकअप अरे सेम होगी. Okay, could you please say that again? नहीं लुकअप A22 यहाँ पे आ जाएगा. Okay. टेबल अरे सेम वही है, A11 से D15 तक. We fix that. Yeah. इंडेक्स नंबर 1 आ जाएगा यहाँ पे. और Okay. false. False. Have you tried it yourself? नहीं सर. It's not working. You get an error here. It's not Okay. working like this, yes. Yes, Fahim. Actually, this is something which I really face during my work life. Sometimes जो है वो the column I needed is that is before the column which I am searching. तो उसकी वजह से ये एरर आ जाता है. So what I do कि मैं वो कॉपी करके लास्ट में ले जाता हूँ और फिर उसको जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो वो चल जाता है. बट ये इस तरह से मैं इसको जो है ना वो टैकल कर लेता हूँ. बट दिस इज रियली अ प्रॉब्लम फॉर मी एटलीस्ट, बिकॉज ये मेरी डेली रूटीन लाइफ में ये फार्मूला यूज होता है एंड आई नीड टू एक्सट्रैक्ट द कॉलम्स. वो सम टाइम बिफोर दैट पर्टिकुलर कॉलम होते हैं और सम टाइम उसके बाद में होते हैं. Okay, so पहले वाला सर हो basically गया, नीचे ड्रैग नहीं किया. पहले वाला हो गया, कैसे हुआ है? ये सर इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट शुरू करेंगे तो A13 पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे LT लिखा हुआ था और फिर कॉमा पूरे टेबल को सिलेक्ट किया और उसको फ्रीज कर लिया, कॉमा 1 कॉमा फॉल्स. Okay, but that doesn't make sense. आपको सर्च तो इसको करना है ना लैपटॉप को. अगर आपके फॉर्मूला के अंदर मैं इसको चेंज कर दूं और नेम को, इसको मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूं, आपका फॉर्मूला अपडेट होता है? आपने तो ऊपर उसको रेफर कर दिया जाके. नहीं हुआ सर अपडेट. ठीक है, यू आर राइट. आपको तो इस सेल को रेफर करना है, इस सेल को तो आप यूज नहीं कर रहे हो कहीं पे. ओके, अगर मैं ये लेता हूँ तो फिर फॉल्स आता है एंड नॉट एप्लीकेबल आता है. Yeah, so it doesn't work like this. Basically, there's a major limitation of VLOOKUP, and that is what Fahim actually basically just pointed out as well. Ab jo search VLOOKUP can only look towards the right side. Okay, that's one thing. और जो आपने search करना होता है ना, उस table array का first column वो होना चाहिए. So basically, why are we getting an error here? VLOOKUP is actually going to that table and it's searching for laptop in the first column here, because VLOOKUP को तो हमें नहीं बताया ना कि ये laptop जाके किस column में search करना है. वो तो आपने जो table array दिया है, it's assuming it has to search in the first column there, so it's going there, it's searching for laptop here in the first column. उसको नहीं मिल रहा, वो आपको error दे रहा. So that's the first thing, कि जो आप table array देते हो उसके first column में जाके वो search करता है. Now, since in the first column we've got product codes and not product name, it cannot find laptop there and it returns you an error. Okay, so that's one thing. Then there's another thing. So basically what we have to do is just column में आपको जाके search करना है ना, वो आपके table का first column होना चाहिए. आपका table यहाँ से start होना चाहिए, like this. ठीक है, अब आप करोगे, मैं 1 यहाँ पे देता हूँ, मुझे लैपटॉप रिटर्न कर रहा है. Why is that the case? Now it's going there, it's searching for laptop in this column, और इस column in this table, और इस table का जो first column है, first column में उसको लैपटॉप मिलता है तो उसको यहाँ पे मिल गया. अब मैं उसको कह रहा हूँ, उस table का ना आप मुझे first column से इसके against value उठा के दे लो. अब मैंने table क्या दिया था, उसको table मैंने दिया था B से start करके. So now this is the table that this function is actually looking at. इसको बाकी कुछ विजिबल नहीं है, इसको सिर्फ D11 से D15 तक वैल्यूज विजिबल है. उसका फर्स्ट कॉलम में से मुझे लैपटॉप भी उठा के रिटर्न कर देता है. ठीक है, सो द सेकंड प्रॉब्लम इज प्रोडक्ट कोड आपको देखना है कि वो तो आपके टेबल में आ ही नहीं रहा है ना. सो प्रोडक्ट कोड को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कॉपी करके ना, वन वर्क अराउंड फॉर VLOOKUP is
you copy that, you paste it at the end, और आप फिर अपने टेबल की array जो है वो इस तरह से डालो, टेबल array के अंदर आप ये टेबल उसको दो. Now it goes there in that table, it searches in the first column, इसको laptop मिल जाएगा, और अब इस टेबल के कौन से कॉलम से आपको वैल्यू उठानी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम से आपको वैल्यू उठानी है, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट कोड. तब 1 की जगह यहाँ पे आप क्या कर दोगे? 4 कर दोगे. So now this is the table that we input there. B11 से लेकर E15. The column number, the column index number is 4, and the range lookup is of course false because हमें exact match चाहिए. And when you click on this, हमें यहाँ पे product code मिल जाएगा. Why? Because Vlookup can only look towards the right side. वो सिर्फ right side पे search कर सकता है, left side पे search नहीं कर सकता. And the first column in the table has to be where you are going to search for this value. आप laptop जाके search करोगे तो वहाँ पे इसकी first column में जाके देखेगा. ठीक है? So that's the workaround that you'll need to use in this particular case. आपको value वहाँ से copy करके इधर paste करनी पड़ेगी. And then you can use VLOOKUP like this. ठीक है? Similarly for price now, you again start the VLOOKUP function. क्या search करना है आपको जाके? Laptop search करना है. Where you have to start your table from here, because उसके first column में वो value होनी चाहिए जो आपने search करनी है. So again you have to start from here, and the price is coming in the second column in this table. जो आपने table select किया है उसके second column में आ रहा है, तो आपको 2 यहाँ पे input करना पड़ेगा. Before that I have to fix that. Fix करना है table को, and the second column from there, and I have false at the end. That's the exact match. Let's go input here. I get the price as well. So this is how I can get product code and the price. Does that make sense? Any problems there? No. Ramsa, you wanted to say the same thing, or you had another suggestion for this? No, sir. My suggestion was also the same. I still haven't figured out a workaround for this one. Okay, all right. I'm still facing So, yes, Fahim. I'm just adding that I'm still facing this problem. Okay, all right. So VLOOKUP के अंदर, this is a major problem. When you've got large data sets, it causes multiple problems. एक तो आप उस तरह का copy करके data बार-बार duplicate data हो रहा है, and if the data is large enough, अगर आप कोई बड़े data का वो काम करते हो, like hundreds of thousands of rows or something large, in Excel वैसे भी large data के लिए बना नहीं है इतना, it tends to get stuck. लेकिन जब आप duplicate करते हो, it actually is creating another instance of that same data, and it's eating up more of your space, and that is not ideal. Okay? So VLOOKUP has this major limitation. If you want to use this, you have to work with this. Now, there's actually another way to do the same VLOOKUP, and that is actually by combining 2 different functions. Okay, I can copy this below. आपके पास 2 functions होते हैं. One function is called index, the other is called match. ठीक है? पहले देखते हैं कि ये index और match functions होते क्या हैं. So I'm just copy that table here as well. Might work. Okay. So we're going to say solve the same problem again here, and we're going to do that using a different set of functions. Okay, there's a function called index. Okay, let's start this function and try to understand what this is. So index function, it returns the value or reference of the cell at the intersection of a particular row or column given a range. So basically, index function, अगर आप ये पूरा टेबल डाल दो, पूरा टेबल मैंने इनपुट कर दिया, you can tell index कि मुझे इस टेबल में से एक specific row और specific column चाहिए, right? So for example, अगर मुझे यहाँ पे डालना है इसी function के अंदर laptop के against मुझे
वो चाहिए LT चाहिए, that's the product code, right? So मैं क्या कर सकता हूँ, I can give this array as an input, ठीक है? I can see LT जो है कहाँ पर आ रहा है, इस रो के अंदर आ रहा है, it's coming in the third row, right? So in the table that I input, उसके अंदर third row के अंदर ही आ रहा है, I input 3 there, and what is the column number? The column number is 1, ठीक है? So row number is 3, column number is 1. When I close this, I get LT as the return. ठीक है? So मैं क्या कर सकता हूँ? I can give table as an input, and I can tell specifically which row number and which column number you need, and I can get that result. ठीक है? Does that make sense? Yes. What is the I problem have here? one thing. If you Yeah. सर ये तो फिर हर एक के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, so we won't have a generic formula. Yeah, so we have to manually first find out row number क्या है, column number क्या है, जाके input करेंगे, and we get the result, right? So that's not, of course, what we want to do, right? So now the problem is, how do we automate this thing? So where do you get this 3 and 1 from? अब 3 आपको मिल जाए किसी तरह से और 1 आपको मिल जाए किसी तरह से, ठीक है? So 1 तो आप पहले भी खुद डालते थे VLOOKUP के अंदर, you would tell the column number yourself VLOOKUP के अंदर भी, है ना? You would tell कि third column से value उठानी है, second से उठानी है. The major problem is the row number आप कैसे find करो, ठीक है? That's where this function called match comes to your help. Match function क्या करता है? So let's look at the description first. It returns the relative position of an item that matches a specified value. अच्छा, so match में आप क्या करोगे? एक आपको इसको बताना है किस value को आपने ढूंढना है वहां पर जाके, ठीक है? आपको ये क्या बताएगा? उसकी position बताएगा. So let me actually tell you what it does. So let me actually do it separately first for you to understand it better. So let's say मैंने यहाँ से उठाना होता, मुझे लैपटॉप सर्च करना है, इस टेबल में उसकी क्या पोजीशन है, कौन से नंबर के ऊपर आ रहा है. I could use A21 as my lookup value. I could give this as an array. ये प्रोडक्ट नेम को मैंने अरे दे दी, उसके अंदर इनपुट कर दिया, ठीक है? इस कॉलम के अंदर ये मुझे बता देगा कि किस पोजीशन के ऊपर लैपटॉप आ रहा है, राइट? एंड देन द मैच टाइप is the same thing जो पहले भी हम देख रहे थे. It's either an approximate match or an exact match. हमें यहाँ पे exact match चाहिए होता है. यहाँ पे it's actually not true or false. यहाँ पे आप false के लिए basically you've got exact match के लिए you've got 0. और greater than or less than के और इसमें options होती हैं. We are going to use exact match in most cases. So हम यहाँ पे 0 input करेंगे match type के अंदर, ठीक है? It's the same thing as false that we had in VLOOKUP. तो यहाँ पे हम 0 डालते हैं for an exact match. Yeah, every function has different implementation. तो यहाँ पे उसने 0 use किया हुआ है for an exact match. यहाँ पे हम 0 input कर देते हैं. ये क्या देता है? It tells us it's the third row number. Does that make sense? So see how it could help us there. वो जो 3 number हम खुद input कर रहे थे, हम यहाँ से उसको देख सकते हैं कि अच्छा लैपटॉप कौन से नंबर पे आ रहा है, तो मुझे उस कॉलम से वही नंबर चाहिए, थर्ड वाला नंबर, ठीक है? So what I can do is I can go there, instead of inputting this row number myself, I could use this match function. I could say match this with this column. इसको मैं fix कर देता हूँ, of course I don't want it moving. Match type जो है वो exact. Close this. Row number मैंने automate कर दिया like this. And now when I input this, I get LT as the return. I can extend this formula now. Now it works. Any issues there? So it solves that. Yeah. प्राइस के लिए भी, लेकिन प्राइस के लिए इसमें मसला नहीं होगा कंसीडरिंग जब हम इसको राइट साइड पे ड्रैग करेंगे. Yeah. So that problem remains. So ये हमें VLOOKUP में फेस करना पड़ता था, by the way. VLOOKUP में भी हम जब प्राइस के लिए करते थे, वहां पे जाके हमें कॉलम नंबर खुद से डालना पड़ता था. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वी हैड फोर्थ कॉलम, वहां पे वी हैड सेकंड कॉलम. वी हैव द सेम प्रॉब्लम हियर एज वेल. तो हमें प्रोडक्ट कोड उठाना है, हमें बताना है उसके फर्स्ट कॉलम से वैल्यू उठानी है. वी गॉट द फर्स्ट कॉलम हियर. We can use the same formula. For example, let's copy this formula,
in the other column there. यहाँ पे जाके आपको column number से बताना पड़ेगा कि ये price जो है यहाँ पे कौन से column के अंदर है, third column के अंदर, and then it works, you can just extend it below like this. तो ये चीज आपको VLOOKUP में भी करनी पड़ रही थी और यहाँ पे भी करनी पड़ रही है. We will see how to automate this as well. Just give me a minute. लेकिन अभी के लिए देखें, we have matched VLOOKUP here, and we are even better than that because we don't have to copy that column anymore. Copy किए बगैर हमने इसको figure out कर लिया है कि आप प्रोडक्ट नेम के लेफ्ट पे भी सर्च कर सकते, लेफ्ट से भी कुछ उठा सकते हो, आप राइट से भी उठा सकते हो. बेस्ड ऑन प्रोडक्ट नेम आप राइट साइड से भी वैल्यूज उठा सकते हो और लेफ्ट से भी उठा सकते हो. You only need to input the column number there. वो column number तो आपको पहले ही बताना पड़ रहा था. आप थर्ड कॉलम से उठाना है, फर्स्ट से उठाना है, कौन से उठाना है. Is that okay? So this is the only manual input now. 3. That is the only input that we have to do. कौन से columns value उठानी है. Of course, if you've got a limited number of variables, that's generally not a lot of work. आपके पास 10 variables हैं. Normally rows ज़्यादा होती है ना. Rows का मसला है कि आप rows manually नहीं कर सकते. That's impossible and that's not efficient. In terms of column numbers, वो they're generally limited number of variables, limited number of columns. उसमें आप एक दफा आपने input कर दिया, and then you can work with it. Generally, most people do it like this, and they input that column number manually. VLOOKUP के अंदर भी like we had 2 there and we had 4 there. तो बताएं यहाँ तक is it clear or is there any confusion? If this is clear, there's only one more step to automate that thing as well. So we'll get to that. But let me know if this point is clear and if you're able to replicate this at your end as well. Is this okay? Yes, sir. Yes, sir. So anybody else? So I'm getting. So can I have a raise of hands from everyone who is fine with this? So it's just to check if everybody's up as well, or sitting in front of their computer since they have their cameras off. So just to check we have everyone here. आपने सर इंडेक्स और मैच को ना अलग-अलग समझाया हमें ना, तो इसको अब जब आपने इकट्ठा करके लगाया, ये जरा दोबारा रिपीट कर दें, यानी कि सेपरेटली समझ आ गई. अब आपने इसको एक ही कॉलम इस तरह यूज किया है, वो जरा इसको रिपीट कर दें. प्राइस के अंदर जो पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है. Okay, so basically देखें. Okay, great. So I've got a response from most people. So that's good. Basically, index function के three arguments हैं. Array, row number and column number. ठीक है. Array तो वो है हमने पूरे टेबल को इनपुट करना. Now the problem is, how do you find the row number and how do you find the column number? तो रो नंबर फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हमने रो नंबर की जगह, रो नंबर वाले इनपुट की जगह हमने ये मैच फंक्शन लगा दिया. मैच फंक्शन हमें रो नंबर निकाल के दे देता है और यहाँ पे जाके इनपुट कर देता है इस फॉर्मूला के अंदर. तो बेसिकली दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. इंडेक्स फंक्शन के अंदर हमने मैच फंक्शन यूज किया है टू फाइंड द रो नंबर. So that's all that's happening. So row number कैसे find कर रहे हैं? Match function what it does is it searches for laptop, it searches for 821 in that column. In which column? In product name का column in the other table. यहाँ पे जाके B11 से B15 के दरम्यान में सर्च करता है लैपटॉप को. लैपटॉप जिस पोजीशन के ऊपर आ रहा है, so first, second, third पोजीशन के ऊपर लैपटॉप आ रहा है, तो मुझे 3 रिजल्ट दे देता है. तो मैं इसको देखूँ जाके evaluate formula में, what's happening is when it works, when this formula works, the match function here, ये मैं इसको evaluate करता हूँ, मुझे 3 रिटर्न दे देता है ये रो नंबर. So that's all that match function is doing there. आपको रो नंबर निकाल के वहां पे दे देता है. And then column number आपको पता है कि थर्ड कॉलम के अंदर से प्राइस आपको उठानी है, वो आप वहां पे इस तरह से इनपुट कर दें. Is this okay? जी सर, ठीक है सर. अगर वैल्यूज 100 200 हैं सपोज, तो उसको हम
ड्रैग करके कर्सर से भी काउंट कर, नीचे जो काउंट आ रहा होता है वी कैन सी दैट कि ये काउंट 88 नंबर पे है। तो यूजुअली जो हम डेटा ले रहे होते हैं वो डेटा कम होता है और जिसमें इनपुट दे रहे होते हैं वो मिलियंस में भी हो सकता है। तो काउंट फंक्शन Yes. प्रॉब्ली कैन वर्क फॉर लेसर फॉर टेकिंग दिस सॉर्ट ऑफ नंबर के किस नंबर पे लैपटॉप आ रहा है, जस्ट बाय ड्रैगिंग ऑप्शन एंड सी बिलो द काउंट of that number. But that's what we are saying. We should not do it manually, right? We have a function for this. That's what we should be using. आप laptop जाके 3 पे खुद से क्यों करोगे? That's what we have this match function for. कि आप उसकी position check कर लो कि वो कौन सी position के ऊपर आ रहा है. Fine. Manually तो नहीं कर सकते ना ये. बिल्कुल ठीक. Okay. Now there's only one problem left. There's only one thing that we have not automated here. अब यहाँ पे एक चीज तो वो भी देख लेते हैं. 821 के तो हम right side पे move करें. 821 को हम right side पे move करें तो column should not change. The rows should change up and down. लेकिन column change नहीं करना चाहिए. तो हम क्या करते हैं? इसका column fix कर देते हैं. $A then we put 21. ठीक है? तो हम इसको ताकि right side जब drag करें हमें वो उस तरह से प्रोडक्ट नेम वाला जो है उसको दोबारा से नहीं लिखना पड़ता. दैट रिमेन्स A11. ठीक है, वो B11 पे ना आ जाए. वो हमने फिक्स कर दिया उस तरह. ठीक है, सॉरी A11 नहीं, A21 हियर. वो हमने फिक्स कर दिया. राइट साइड मूव किया तो इट स्टेज A21. इट डजंट मूव. व्हेन वी मूव डाउन इट डज चेंज. रो नंबर्स का चेंज होता है फिर भी 21, 22, 23 एंड सो ऑन, बट द कॉलम नंबर डजंट चेंज. ठीक है, so that is working. Now the only thing that's left is हमने यहाँ पे 1 खुद इनपुट किया था, यहाँ पे हमने 3 खुद से इनपुट किया था. तो हम यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे क्या किया था, 3 खुद से इनपुट किया था. जाके चेंज करना पड़ेगा, फिर हमारे पास प्राइस आएगी, है ना. How do we automate this thing? Now इसके लिए एक जो है रिक्वायरमेंट है, and that is that the headers in both columns should be the same. अगर तो ये आप कर लें, then you can basically use basically automate this thing as well कि column number कौन सा होना चाहिए. ठीक है, if you're able to figure that out, you can also automate that part. अच्छा, let me actually lower everybody's hand first because I can see some hands raised from before. Just want to ensure कि अभी कोई नया hand raised है तो I know. Yes, Jamal, you want to say something? No, sir, I have just checked my lower end of the. Okay. So I've lowered everybody's hand now. अगर किसी का क्वेश्चन है सिर्फ तब हैंड रेज करें. Ali, you want to ask something? Yes sir. सर आप वो इंडेक्स वाले उस पे सेल पे जाइएगा जहाँ पे अभी आपने मैच वाला लगाया ताकि मैं फॉर्मूला देख सकूं. क्या सर इसमें जो आपने पहली अरे दी है वो आपने A11 से E15 तक दी है और इंडेक्स में, और मैच में आपने B से स्टार्ट किया है. इज देयर अ स्पेसिफिक रीजन फॉर इट और इज इट बाय चांस? देखिए, मैच में हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट नेम जाके सर्च करना है वहां पे, है ना. ठीक है, प्रोडक्ट नेम जाके उस टेबल में सर्च करना है. अब प्रोडक्ट नेम किस कॉलम के अंदर है? इस कॉलम के अंदर. तो वो आपने उसको बता दिया. इस कॉलम के अंदर से आपको देखना है प्रोडक्ट नेम, ये जो लैपटॉप है किस पोजीशन के ऊपर आ रहा है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अच्छा, okay. Now the problem is, how do we automate this thing? Now I said there's a requirement for this, and that is that you have to have the column names the same in both tables. For example, अगर यहाँ पे product code है और आपको ये fetch करना है दूसरे टेबल से, तो वहां पे भी इसका नाम product code ही होना चाहिए. So sometimes you have, let's say, only code written here. You cannot automate in this way. अगर आपके पास यहाँ पे code है, वहां पे product code है, there are different variable names, तो आप इनको फिर match नहीं कर सकते. So this is the requirement that names of the columns, column headers should be the same. अगर वो same है, you can automate that other thing as well. So what you do is you apply the match function for this as well. So आप basically अब उसको यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, लैपटॉप के केस में we were trying to find कि किस पोजीशन के ऊपर लैपटॉप आ रहा है वहां पे, है ना. Now we can use the match function here as well, and we can find
कि ये प्रोडक्ट कोड जो है वहां पे उसका कॉलम नंबर क्या है वहां पे, राइट? सो लेट मी एक्चुअली ट्राई टू पुट दिस आउट देयर. तो मैच हमने स्टार्ट किया. व्हाट यू वांट टू डू इज, यहाँ पे ये इनपुट क्या करना है हमें देखें, कॉलम नंबर हमें इनपुट करना है कि उस टेबल के किस कॉलम से हमें वैल्यू उठानी है, राइट? दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर, किस कॉलम से वैल्यू उठानी है. And what I'm saying is we can use the match function for that as well. And we could say, go in the other table. We can tell the match function, go in the other table, look up this value. Product code को जाके search करो. कहाँ पे? Product code पे जाके search करो. Product code पे भी देखें हम तो right side move करें. तो ये इसकी जो है for example हम price वाले column में जाएंगे तो इसको प्राइस पे चले जाना चाहिए. तो यानी कि रो इसकी कॉलम इसका चेंज होना चाहिए. सो व्हेन वी ड्रैग इट लेटर प्रोडक्ट कोड से प्राइस पे जाएं तो इसका कॉलम नेक्स्ट पे चला जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन जब इसको ऊपर नीचे मूव करें तो ये ऊपर नीचे मूव नहीं होना चाहिए. तो यानी इसकी रो फिक्स रहनी चाहिए और कॉलम फिक्स नहीं रहना चाहिए. सो एम आई क्लियर ऑन दैट? सो आप क्या करना है, यहाँ पे इसकी रो फिक्स कर देनी है और कॉलम को फिक्स नहीं करना. Is that clear? Because product code को मैं नीचे मूव करूं तो I don't want this column header moving down. लेकिन जब right पे मूव करूं तो वो price पे मूव कर देना चाहिए, ठीक है? So that's why I'm only fixing the row and not fixing the column. Okay, so that's the first thing. Now what we want to do is we want to pick up this value from here, column header. We want to go in the other table और हम जाके उसके column headers में search करते हैं like this horizontally. Column headers वाला पूरा आपने जो है ना, अब यहाँ पे खैर मैं cost तक ही चाहिए था वैसे तो, वो तो हमने दोबारा से रिपीटेशन की एंड पे. हमने क्या किया, प्रोडक्ट कोड से लेकर हम कॉस्ट तक गए और हमने पूरी अरे इनपुट कर दी वहां. उस अरे को फिक्स कर दिया. ऑफ कोर्स वी डोंट वांट इट मूविंग और वी वांट एन एग्जैक्ट मैच. अब ये क्या करेगा, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू टेल अस कि प्रोडक्ट कोड जो है उस टेबल के अंदर कौन सा कॉलम है. So in this case, it's the first column. Price जो है, that's the third column. तो ये match function जो है, आपको वो column number automatically बता देगा कि वो किस column के अंदर पड़ा हो. And that completes our function. इसको अगर enter करें, इस function को मैं नीचे भी extend कर सकता हूँ और right पे भी extend कर सकता हूँ. And I don't have to manually input anything. So I've got, if I've got 20 columns and 1,000 or 100,000 rows, I just need to input a function in this one single cell, and I can just copy that function down and right, and it's going to work for all the cells in that range. So that's very powerful. So इसमें आपको कोई manual, आपको कुछ input नहीं करना पड़ रहा. Everything is happening automatically just by using index match और उसके अंदर दो match functions to find the row number and the column. So I'll leave it out here like this. Let's have a 1-minute break. So Zan going on here. And let me know if you have any questions on this. So we'll start again after a minute.
All right. So, any questions on this? Is this clear? Yes, Yes, sir, I Hira. have a question. Yes, Fahim. Sir, we have selected B20. So it means we can't copy it in the price column. Why? और सर मैंने ऐसे किया वो रिजल्ट जो है वो that is the same LT and TV. So, okay, so you see, हम इसको fix, इसके सिर्फ रो fix करेंगे, इससे कॉलम नहीं fix करना, इसके सिर्फ रो fix करेंगे ताकि जब हम right left move करें, it should move, but when we move up and down, it should not move. Okay, thank you. So that's very, so this mixed referencing is really powerful. You have to, understand it. When we should fix the row, when we should fix the column, and when we should fix both of them. So this is important. Yes, Hira. So if we had practiced it at a big data or big table or then I think it would be more easy to understand. I taken it a little bit tricky because we had a short data there. So if we had a big table, how many times we have to find something, we have to copy all the table again and again. No. So let me actually show this to you in another scenario. So we might have something here as well. Let me see. यहाँ पे हमारे पास कोई यूनिक है कुछ female. Okay, so let's try it here. So so I'll actually show that to you in a larger data set. In this, yeah, we also have another table, by the way. Here we have a unique key here. We don't have a unique key here. We have a unique key here. We don't have one here either. Let me actually check यहाँ पे कोई duplicates हैं. Data. So we do have duplicates here. The roller coaster. We also have a few here. Okay, so that might work better. Okay, so a Titanic data set hai. We'll have a look at this in a moment. But let me answer first if there were any other questions on that. Iske upar koi aur questions? Anyone? Excuse me, sir. Yes. सर जो असाइनमेंट हमने सबमिट करनी है वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले वही करनी है जो आप एडिशनल काम कर रहे हैं ये भी साथ मैंने भी बनाना है यहाँ पे अपने पास जी आपको ये सब कुछ फॉलो करना है सो आपको ये साथ साथ जो है जो हम चीज यहाँ पे कर रहे हैं यू हैव टू फॉलो दिस जैसे ये VLOOKUP के साथ अलग से कैलकुलेट किया ऊपर इंडेक्स के साथ अलग यस इंडेक्स मैथ से भी आपको अप्लाई करना है एग्जैक्टली सर ये आप प्राइस का बताते हैं आपने प्राइस में कौन सी रोज और कॉलम फिक्स की थी मेरा जो फर्स्ट आंसर है वो ठीक आता है दूसरा नहीं आ रहा ठीक आई हैव ट्राइड मल्टीपल ऑल आई हैव डन इज आई हैव जस्ट इनपुट वन फार्मूला इन दिस सेल हियर मैंने सिर्फ यहाँ पे एक फार्मूला इनपुट किया ठीक है अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें हमें फिक्स करनी चाहिए सो लेट्स डिस्कस दिस सो फर्स्ट वी गॉट द टेबल A to E ये भी हमें वैसे D तक लेना चाहिए E तो हमने खुद से एक्स्ट्रा डाला था तो लेट्स से A to D हमने कॉलम ले लिया ठीक है नाउ इन दिस टेबल शुड रिमेन फिक्स्ड आप राइट मूव करो नीचे मूव करो ये टेबल तो मूव नहीं करना चाहिए ठीक है सो दैट रिमेन्स फिक्स्ड हमने इसके दोनों फिक्स कर दिए ओके देन वी कम टू द मैच फंक्शन में वी हैव टू सर्च लैपटॉप फर्स्ट तो जब नीचे जाएंगे नेक्स्ट रो के अंदर हम लैपटॉप पे सर्च नहीं करेंगे हम नेक्स्ट चीज सर्च करेंगे दैट्स टेलीविजन उससे नीचे जाएंगे विल बी सर्चिंग फॉर कीबोर्ड एंड सो ऑन ठीक है सो
What's happening here is we have to change our rows. The row number को fix नहीं करना. However, when you move right या price पे move करते हो, किसी और column पे move करते हो, you should not move the column to the right. Laptop उनके product name के first column में पड़ा हुआ है, वो आपका right side पे साथ साथ move नहीं करना चाहिए. तो हम सिर्फ क्या करेंगे, हम यहाँ पे column fix करेंगे, row fix नहीं करेंगे. So we have a $sign before the column letter and not before the row number. ठीक है? तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया, column letter fix किया. After that we've got the product name का पूरा column, तो वो हमें वो fix रखना है. हम हमेशा product name ही search कर रहे हैं वहाँ पे, because that's the key, that's the variable that connects both the tables. तो यहाँ पे product name है, उधर भी product name है, तो हम इन दोनों connect करके हम use कर रहे हैं उसको. ठीक है? So that remains fixed. उसके दोनों row number और column letter दोनों same. After that we are searching for B20. Product code को हम जाके search कर रहे हैं वहाँ. अब प्रोडक्ट कोड को देखें, जब नीचे नेक्स्ट रो में आएंगे तो प्रोडक्ट कोड को नीचे मूव करना चाहिए, साथ नहीं करना चाहिए, नीचे ऊपर मूव नहीं करना चाहिए. However, when move to the right, जब नेक्स्ट कॉलम में जाएं तो प्रोडक्ट कोड should change to price. यानी कि कॉलम्स चेंज होने चाहिए, रोज चेंज नहीं होनी चाहिए. सो रो को फिक्स कर दिया. यहाँ पे रो 20 से पहले हमारे पास $sign है और कॉलम से पहले हमारे पास $sign नहीं है, तो कॉलम चेंज हो सकता है, रो चेंज नहीं हो सकती. Does that make sense? जी सर, बिल्कुल क्लियर है. Okay, great. So now once we have this, we can just extend this formula like this, and works for everything. We don't have to do anything else. Any other questions here? Any problems? No sir. Yes, no sir. Thank you. Okay, all right, great. So let's just quickly apply this to another scenario. आपके पास एक Titanic data given होएगा वहाँ पे, है ना? In it's one of the last few sheets. Now, what I want you to do is, it has around 891 rows in the data. ये passengers का data है from actual incident. And these are actual passengers who were there, so it's a subset of the data. It's not all the passengers, but it's a subset of that. Or उनकी कुछ information given है, whether they survived or not, which passenger class they were sitting in, what were their names, their gender, age, and so on. Okay. What I'm going to do is I'm going to add some rows, some columns here. So column add करने के लिए क्या करते हैं? You just right click on the column any column. वहाँ पे insert कर दो. So I'm going to insert a few columns there. It's taking time for me for some reason. Okay, so I have the columns inserted. Now let's say I have another table. यहाँ पे I need information about some passengers. ठीक है? So मैं एक नया column बनाता हूँ, यहाँ नया table बनाता हूँ यहाँ पे. Just copy some column letters from here, column headers from there. So got this table like this. So let's say मुझे सिर्फ ये information चाहिए इनकी. I can disturb the order as well. Let's say change the order a bit. Why is it taking so much time? Excel के लिए मसला, फाइल थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो बस फिर Excel फारिग हो जाता है. Okay, we've got age there. And yeah, let's say that's the information that we want, and we want it for a number of passengers. And for that, what I'm going to do is I'm going to create some random numbers. So we've got 891 passengers. मैं क्या करूँगा? I'll just create a random number here. Rand between एक formula होता है. What I'm doing is 1 or 891 के दरमियान में कोई random number यहाँ पे मिल जाता है. I do it for, let's say, 50 passengers. So I've taken 50 passengers from that data randomly. IDs यहाँ पे लिख लिए. Okay. Now there could be some repetitions there as well, so that's fine. ये 50 passengers का data आ गया मेरे पास. ठीक है, randomly मैंने कुछ निकाले, एक sample लिया.
अच्छा यहाँ पे मसला ये होगा, मैं कुछ भी यहाँ पे इनपुट करूंगा ना, ये वैल्यूज चेंज करते जाएंगे, बिकॉज रैंडम नंबर हमेशा बार बार जनरेट होएगा, तो वैल्यूज चेंज करता जाएगा. What I'm going to do is I'm going to select this data, control step down, copy it, and then paste it at the same position. और यहाँ पे बस ऑप्शन आ रही होगी पेस्ट वैल्यूज. तो मैंने उसको वैल्यूज पेस्ट कर दी, तो मेरे फॉर्मूलाज खत्म हो गए पहले वाले. एसेंशियली मैंने क्या किया, कॉपी डेटा, कॉपी कर लिया. अब ये भी कर सकते हो, ऊपर आपके पास ऑप्शन होती है पेस्ट के नीचे जाके ना, paste values from there. That was different options that we could try to experiment with what happens in each cases, in each of those cases. One very useful function is of pasting values. वो क्या करता है, जो भी आपको values होती हैं उनको paste कर देता है, function आपके खत्म कर देता है. तो इसकी वजह से मैं क्या होएगा, random number बार बार generate नहीं होएगा. Okay. So I've got some passenger IDs here. I've got around 50 passengers. ठीक है. Now what I want is I want to extract information about each of these passengers from the other table based on their passenger ID. And मुझे ये information चाहिए, whether they survived or not, which passenger class they were sitting in, what was their gender, and what was their age. ये information मुझे वहाँ से extract करनी है from the other table. Now what I want to do is I just want to write one formula in this one single cell, and that should do all the working for me. Okay, and how do we do that? We apply what we learned just now. We apply the index function. We start with the index function. Index function के अंदर हम क्या करते हैं? We input the whole table first. Okay, ये पूरा फिर table डाल दिया मैंने. Ramsha, you want to ask something? Sir, again, like in this particular case, जो हम अभी कर रहे हैं Titanic वाला, उसमें the passenger ID is your first column. So we can actually use Vlookup if you want to, right? Yes, you can use that as well. Yes. So let me actually change that as well. So let's actually just, I'm going to cut that from there and paste it somewhere in the middle. So let's say मेरे पास वो column था, it was somewhere in the middle here. It's again taking time. Okay. All right. So मेरे पास passenger ID जो है, it has come somewhere in the middle here. ठीक है, अब मुझे इससे left से भी कुछ चीजें उठानी है, right से भी उठानी हो सकती हैं. So this is what I have. This is the general case, right? Okay. So let's use index. Now the first thing I do is I give the whole table as the input. मैंने पूरा table यहाँ पे input दे दिया. ठीक है? I need to fix this table. ये move नहीं करना चाहिए. ठीक है? All right. After that, what I want is row number कौन सा होएगा. So how do you find the row number? कि किस रो से आपको information उठानी है. वो 106 passenger ID के ऊपर based होगी. तो हम क्या करेंगे, हम match function use करेंगे. Match function क्या करेगा, it's going to pick up 106 from here. ठीक है, इसको हम fix करेंगे. इसमें क्या fix करेंगे हम? सर इसमें column fix कर देंगे. इसमें हम column fix करेंगे, row fix नहीं करेंगे, right? So let's do that. So ये हमने column fix कर दिया. ठीक है? You have to look up this value where passenger ID है. Passenger ID वाला आपको column देखना है, वहाँ पे कहाँ पर है? So that's right here. ये column आपने पूरा उसको input कर दिया वहाँ पे. And you have to fix this column. ठीक है, ये change नहीं होना चाहिए. Now अगर आप इसमें header include कर रहे हो तो फिर आपने standard रखना है. अगर आप सब चीजों में header include कर रहे हो तो आपने सब में header include करना है. अगर आप किसी में भी नहीं कर रहे फिर आपने सब में नहीं करना. So what I'm doing here is मैं जो column header है वो सब हर चीज के अंदर include कर रहा हूँ ताकि it's a standardized thing और वो मेरी कोई जो है वो वेरिएशन नहीं आए कि वो रो नंबर गलत ना उठा रहा हो. अगर आप एक चीज में हेडर उठा रहे हो साथ तो सब चीज हर चीज में आपने हेडर उठाना है साथ. ठीक है, so I'm just using that. I'm starting from the first row there for all cases. So that's what I have then. I've got lookup value R2, lookup array. कहाँ पे देखना है मुझे उस कॉलम में जाके ये पैसेंजर आईडी सर्च करना है. अब ये क्या करेगा, इसमें एग्जैक्ट मैच कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ. What is this function going to do?
this function, this match here is going to tell me which row number I should extract information from. Okay. Now the second thing I need to input there is on say column the value utani. Okay. So again, I use the match function. I look up something from here. क्या मुझे सर्च करना है वहां पे जाके survived सर्च करना है कि survived कौन सा कॉलम है उस डेटा के अंदर. अब survived के मुझे क्या फिक्स करना है? Should I fix both the column and rows for this? Just the row. Row. Only the row. The column should move because passenger class पे move करना चाहिए, sex move करना चाहिए, age move करना चाहिए. So I'm only going to fix the row for this. Yeah, so that does it for me. So column fix नहीं किया, row fix कर दी. ठीक है? Lookup array कहाँ पे जाके search करना है आपको? आपको इस column headers में search करना है. So you start from the first here. ये सारे columns आपने input कर दिया वहाँ पे. A1 से लेकर O1 तक. And you fix this. And then of course you use the exact match. ठीक है? आपने वो सारे columns input कर दिए. यहाँ पे जाके search करो. Exact match, and this is going to return you which column number this is, the survived column. Okay, and you close the whole bracket. After that, index वाली bracket भी close कर दी. You press enter. ये आपके पास उसका output आ गई. This person did not survive. You extend it now. नीचे भी extend कर दिया पूरा end तक, और उसी तरह से right side पे भी extend कर दिया. And the whole table is complete. No manual input, just one formula applies to all the columns, the whole table there. हमने पूरा table populate कर लिया. Is that okay? Yes, sir. Any issues there? So this is actually one of the most useful things that you would actually find from this Excel sessions that we had yesterday and today, and it's going to be very commonly used. Those of you who work with Excel, it's going to really save your time. Acha. So if there are no questions on this, we'll have a break now and we'll restart at around 4:15 today because we need some time at the end for quiz as well. We'll have a 15-minute break and then we'll come back after that and we'll finish with some of the things that some of the other things that we want to discuss today, and then we'll end this Excel thing for this weekend, and the next weekend is going to be on campus inshallah. We'll do some exercises on pivot tables and pivot charts. Okay. So let's have a break of 15 minutes. In that time, you can also review this again if you want. Quick questions हो इसके ऊपर तो वो भी बता सकते हैं. We'll restart at around 1:15 and 4:15 inshallah. Okay. Lost it during the break. I've not resumed it. Okay, so let me repeat what I'm trying to do here. So we've got this table. Jiसमें we've got some commission percentages for different people. So there's a company that has different sales teams. Let's say if one team makes sales between $0 to $50,000 in a particular month, let's say, they get commission of 5%. If another team makes sales between 50,000 and 100,000, they get a commission of 7%, and so on. Okay, and now let's say you've got depending on whether you're talking about a team or it's an individual salesperson. Let's say
of course 5 salespersons there, and both of them and all of them are making different amounts of sales, right? So we've got 55,000, 57,000, and so on. How do you calculate what percentage of the commission, what percentage of the sales amount they're going to get as commission? So that's the payout rate. You can also find out their final commission amount. So their commission in dollars. So what do we do about this? Any ideas? How do we calculate this? Commission amount Yes, क्या sir. होगी? Sales amount multiplied by payout rate. वो तो वही होगा. Okay. Percentage नहीं आपको So dollar through amount चाहिए. VLOOKUP formula. VLOOKUP. Why VLOOKUP? So with instead of false, we will use true, and then we can find out the payout rate. Okay, so that's very good. So let's actually. So is there another way of doing this? So something that we have discussed in class? हमने क्लास में क्या डिस्कस किया हुआ है? अगर इस तरह कोई केस हो, आप क्या the first thing that comes to your mind is probably what? Grading में हमने क्या किया था? Logical formula, if then formula. Yeah, so you could look at the if function, right? So if let's say हमारे पास ये सारे tiers के minimum amounts यहाँ पे इस तरह से given है, for example, what we could do, for instance, is we could say apply the if function. So if this amount is let's say between 0 and 50,000, you give 5% payout. If the amount is between 50,000 and 100,000, you give 7% payout. If this is between 100,000 and 150,000, you get 10%. And if it's more than 150,000, you get 15%. You could use if function like that. जो हमने nested if functions किए थे, हम वो use कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, so that's one possibility. But we saw earlier that उसमें क्या होता है, we have a very complicated function, as in it's not as complex, but it gets very long at least. So depending on how many nested ifs we need, it tends to get quite lengthy, the function that we have there. There's actually a workaround for that. It's not a workaround, there's actually another way of doing that, and that's fairly simple. आपकी ये conditions जितनी मर्जी बढ़ जाएं, if you can formulate it in a particular way, आप इसमें VLOOKUP use कर सकते हो. And that's because VLOOKUP के जो approximate match function है, that's defined, that's actually developed in a particular way that helps you solve problems like these. So let me actually explain first how the VLOOKUP approximate match works. Remember, Vlookup function में क्या होता था? We had so if I open this, we have 4 inputs here: lookup value, table array, column index number, and the last argument was range lookup. और इसमें एक option थी true, एक option थी false. False में क्या होता? True में क्या होता है? You got an approximate match. और approximate match कैसे work करता है? Let me write down some numbers here, some random numbers. I'm just inputting values randomly. And let's say I've got some number here that's 649. Okay. Now, what do you think? How do you think this function should behave? आपको किस तरह से इसका आपको result मिलना चाहिए? अगर मैं VLOOKUP यहाँ पे use करता हूँ और मैं lookup value देता हूँ 649, तो यहाँ पे जाके search करता है इस array, इस table के अंदर, और इसमें से first एक ही column है, तो मैं first column उठाता हूँ और मैं यहाँ पे true लिखता हूँ. What do you think should happen? Any guesses? मैं इस number को जाके table में search कर रहा हूँ. Zubair साहब के अलावा कोई और, somebody else who hasn't had experience with this before, somebody else, what do you think should happen? What should it return? $512 or something near to 649. So since true means approximate match, what first comes to your mind is कि जो closest value होगी, that's what it should return, right? Let's try to enter this. What do we get? We get 123. Okay, what's happening there? 123 कहाँ से आ गया? Any clues?
Yes, Zubair sir. Why is it happening? Why do we get 123 there? $649. No. हमने approximate match लगाया and we get 123 as the result. See? So no idea. Yeah, so no idea. So basically, approximate match doesn't work very intuitively. It doesn't make sense when your data is like this. Okay, इस तरह के data के अंदर ना it's not going to make any sense. It's quite weird the way it is designed. However, अगर मैं इसको sort कर दूँ ना data को, आपने जब भी approximate match use करना है ना, you will need to use sorted data. So I'll first sort this and then explain how is it really going to work. अब देखें वो उसकी value भी वहाँ पे change हो जाएगी when I sort this. इसको मैं sort कर देता हूँ in ascending order. Okay, now when I do it in ascending order, now it gives me 512 as the result. है ना? And this is what Hassan guessed earlier. The closest value दे देगा. So we're getting 512 here, and that makes slightly more sense than before. So that's the first thing that you should know. कि जब भी आप approximate match यहाँ पे use करेंगे, you have to have the data sorted. जो आप जिस value को search कर रहे हैं ना, जिस column के अंदर search कर रहे हैं, वो जो है वो column sorted होना चाहिए. That's the first thing that you need to remember. ठीक है? Is that okay? Is that point okay? Yes. Ascending order में sorted होना चाहिए. ठीक है? And then you can use approximate match. अच्छा. Now, how is it really working? हमें 512 return दे रहा है. आपको let me actually write down another value here. So let's say if I had 675 there. So मैं 675 भी वहाँ पे add कर देता हूँ. अब 649 मैंने जाके search किया इस table के अंदर. What should this give you? Hassan, अब क्या होना चाहिए? Approximate match करते हो 649 को उसके अंदर. What should it do now? ये सर पहले फिर मेरा 512 देगा दोबारा. That is. But isn't 675 closer now? Ascending order में पहले वो आ रहा है सर नजदीक. Yes, लेकिन approximate match में तो basically ये होना चाहिए कि जो closer value है वो आनी चाहिए. So but it doesn't give that value. So basically, let me explain how exactly this function is basically working. When you have data sorted like this, what happens is it's going to pick up this value 649. It's going to start searching in this table. ये शुरू से start करेगा 3 पे किया. 649 is bigger than 3, so it moves on. 12 पे जाके देखा 649 is still bigger. इसको लगेगा अच्छा आगे शायद 649 मिल जाए इससे कहीं पे. आगे गया नहीं मिला, इस पे गया नहीं मिला 649, and it's still bigger than this value. Next value पे गया 123, 649 is still bigger. Okay, 512 पे गया 649 is still bigger. It moves on. It moves to 675. It goes to this step and it realizes, okay, now I have moved on. I've actually skipped that value 649. उसने miss कर दिया पहले. तो at this point it's going to stop. 675 पे जाके क्या होएगा? It's going to stop there. और जो last value उसको मिली थी वो return कर देगा. ठीक है? तो पहले वो देखेगा 649 से बड़ा नंबर उसको मिल गया जहां पे पहला बड़ा नंबर उससे पिछली वाली value return कर देगा. Is that okay? जब ये data sorted होएगा इस तरह से, it's going to search for that value in that column. जब उसको उससे बड़ा number मिल गया ना, उससे पिछली वाली value उसने return कर देनी. Let's see how this is going to be useful here. Means अगर सर 690 होगा तो 675 दे देगा. इससे आगे 675 से आगे अगर 690 होगा. नहीं 512 ही देगा because 675 तो 649 से बड़ा है ना already. Okay. अगर मैं यहाँ पे कोई और इस तरह डाल देता हूँ, if I were to put for example 620, इस पे मुझे 620 आंसर मिल जाएगा. Why? Because it starts going from there. 620 पे भी it hasn't stopped because 649 is bigger. वो next step पे चला जाएगा 675 पे. यहाँ पे उसको बड़ा नंबर मिल गया. This is where it stops. और पिछले नंबर पे वापस चला जाएगा और पिछला नंबर रिटर्न कर देगा. That's 620. ठीक है?
Now let's see how this is going to be useful here. अब देखें फिफ्थ, आप इसमें क्या करते हो इस तरह के केसेस के अंदर, आप उसके ना मिनिमम वैल्यूज डिफाइन कर देते हो. फॉर एग्जांपल हर रेंज की what you do is you define the minimum value. That's 0, 50,001, 100,001, 150,001. हर रेंज की आपने मिनिमम वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दी. ठीक है. And then you use VLOOKUP formula here. And you say search for this value where in this table. टेबल आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, जो मिनिमम वाली वैल्यू उससे स्टार्ट करना है. उस टेबल में जाके सर्च किया. अब ये वैल्यू कहाँ पे जाके सर्च करेगा, उसके फर्स्ट कॉलम में. ठीक है. 55,000 इसने सर्च करना शुरू किया इन दिस टेबल, इन दिस फर्स्ट कॉलम. 0 पे गया, ओके 55,000 इज बिगर, तो उसको लगेगा आगे मिलेगा. इट मूव्स टू 50,000. ओके 55,000 इज स्टिल बिगर, इट मूव्स ऑन, इट रीचेस 100,000. 100,000 में जाके उसे पता चला कि अच्छा नहीं, आई हैव missed 55,000 before, तो इससे पिछली वैल्यू वो रिटर्न कर देगा. So पिछली वैल्यू पे आया 50,001 पे. अब हमें उसे बताना है हमें कौन सा कॉलम चाहिए. हमें सेकंड कॉलम चाहिए, हमें पे आउट रेट चाहिए ना. तो पिछले वाले का पे आउट रेट उठा के हमें दे देगा 7%. So वही हमें चाहिए था, because 55,000 किस रेंज के अंदर आ रहा है, it's in the range 50,000 to 100,000. When we click that, we get 7% as the return. We can just extend the formula and we get all the returns there. So it's just as simple as this. You just need to use one formula. आपको nested ifs use करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी. So let me repeat. What's happening here is you start with 55,000. आप दूसरे टेबल के अंदर गए, आपने सर्च करना शुरू किया. Remember, it's sorted in ascending order. That's the case when it works. और इसमें the key is जो ranges आपको होंगी उसकी minimum value आपने वहाँ पे लिख देनी है. So 0 पे सर्च किया, उसको नहीं मिला, आगे चला गया. 50,000 से आगे चला गया. 100,000 पे it stops and gives the previous value. और आपको सेकंड कॉलम चाहिए था, उस रो में वो क्या करेगा, आपको यहाँ से 7% उठा के दे देगा. Similarly for 257,000 for example. Now what does it do for this? It starts moving from there. 0 पे गया, नहीं मिला. 50,000 पे चला गया, आगे चला गया 100,000 पे, 150,000 पे, इससे आगे चला गया. अब it's basically stops at that point. इससे आगे उसको कोई वैल्यू नहीं मिली, तो लास्ट वैल्यू जो भी थी उसने वो रिटर्न कर दी, 15% वहां से दे दिया. 124,000 पे क्या हुआ? Start with 0, 50,000, 100,000, 150,000 पे जाके पता चला I've missed that value. Go to the previous value. उसके आगे जो वैल्यू थी 10% वहां पे रिटर्न कर दी. So this is how we can calculate, we can fetch these percentages from that data. Any questions on that? So please repeat it once. We totally missed it. मतलब ये वैल्यू कैसे रिटर्न कर रहे हैं, परसेंटेज में कैसे रिटर्न कर रहे हैं? Because were you here when we were looking at the VLOOKUP formula? No sir, but I did understand आपने क्या किया है फॉर्मूला के अंदर. But so this 2 here is basically telling us which column we need to pick from there. So if we have 2 there, it inputs the second column. So हमें रो नंबर पता चल गया यहाँ से by searching. हमें पता चल गया हमें इस रो से उठानी है कोई वैल्यू, right? And then we tell it कि हमें सेकंड कॉलम से वैल्यू उठानी. So that's the percentage. हमें इस टेबल के अंदर से सेकंड कॉलम में से वैल्यू होगी वो दे देगा. If we input 1 there, फिर तो हमें वही 50,000 उसने रिटर्न कर दिया वही. That's not what we want. What we want is the value in the second column, उसकी corresponding percentage है, हमें वो यहाँ पे रिटर्न करना है. That's why I input 2 there, because second column is the payout rate. That's what we want. Okay, sorry, got that. Thank you. Yeah, so you can also automate this. कि ये 2 कहाँ से आ रहा है? So we discussed that earlier. You can use the match function here if you wanted. Match function में आप क्या करते? यहाँ पे आप payout rate लिखते. You could fix the row here. You could look up in that array. उस headers वाली array थी वहाँ पे. ये input किया, इसको fix किया, false किया, and you could do this automatically. आपको वो भी input नहीं करना पड़ता. Could automate that as well. ये second column आपको ये return कर देगा. So हमने match function में काफी detail में पहले discuss किया है. You could also use this if you wanted. ठीक है? But I'll return to that same thing for now. Is that okay? अच्छा. Now I got a question in the chat box.
what if we had 649 in the last two? So that's the point, right? So approximate match, again, it doesn't work like we would expect it should. अगर मैं 649 यहाँ पे add भी कर देता हूँ और मैं इस formula के अंदर मैं इसको extend कर देता हूँ, ये पूरा data consider करे, even then it's not going to actually return me the exact value. It's not going to give me that. It's still going to stop at that point because देखें function को तो वो value नजर ही नहीं आई 649. उसने start कहाँ से किया था search करना? उसने start किया था ऊपर से search करना. And it stops at 675. It never goes beyond that. So आपको 649 अगर बाद में आ भी रहा है, it's not going to give us that value. So that's why it's important that you have approximate match use करें, you have the data sorted. Otherwise, it's not going to work. So if you sort this data like this, then it's going to give us the exact value because then it's going to stop at right at that point 649 पे जाके उससे मिलेगा और वहीं पे आपको वही value return कर देगा. लेकिन अगर 649 इसके बाद कहीं पर आ रहा है, then it's not going to give that. Is that okay? Muhammad Mukal? And so what did you do in this commission and dollar box? Yes. I just multiplied the sales Okay. amount with the payout rate, and that gives us the total commission. So that was a simple formula, right? That's multiplication of those. So these are the formulas that we've applied there. Is that okay? Any problems here? Sir. Yes. Okay, so we can actually apply the same thing to that grading thing now. जो हमने grades यहाँ पे किए थे using the if function. We could ये जो इतना बड़ा हमने nested if लगाया था यहाँ पे और हम कितने grades अभी किए थे सिर्फ A, B, C. But we actually have more grades in that A minus, B plus, B minus, C plus, C minus. उसमें if condition लगाने बैठे तो फिर तो आप जो है वो nested if लिखते रहेंगे. So Vlookup is going to help you there, and all you need to do there is you need to have the data in a way कि आपके पास जो ranges हैं उसकी lower limit वहाँ पे लिखी हो आपके पास. ठीक है? So what I'm going to do here is I'm going to copy this sheet. इसको मैंने copy करना है यहाँ पे. Copy sheet करने के लिए I right click there, move a copy. यहाँ पे आपने create a copy में check कर देना है. I've got OK here. बस एक नई sheet बन गई. Logical 2 के नाम से. ठीक है? What I'm going to say here is इसका नाम change करके मैं लिख देता हूँ Vlookup true. Okay. So now I need to apply that grading again. So let me remove these things that I had earlier. इसको मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ. And I've just got this grading criteria there. ठीक है? उसमें मैं और भी grades add कर देता हूँ. So let's be a bit more generous and also assign B and E grades. So कर देते हैं 60, 50, then less than 50 पे you've got an F. Can we use Vlookup 2 here in this case? हमें कुछ और करना पड़ेगा पहले. Sir, is this in the correct format? Yes. Yes, Shamsha. Sir, इसको ascending order में करना पड़ेगा हमें. ये अभी descending order में है. Yes, so that's the key. आपको पहले सबसे क्या करना पड़ेगा, इसको ascending order में करना पड़ेगा. ठीक है? So इसको आप ascending order में कर लें. What I can do here is आपके पास यहाँ पे अगर filter लगा दूँ. सर वैल्यूज को पहले कॉलम में नहीं लेके आना पड़ेगा. जी उसको भी लेके आना पड़ेगा. बिल्कुल वो भी करना पड़ेगा. So we need to do two things here. एक आपको इनका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा. ठीक है? So आपको इसका फॉर्मेट जो है ना डेटा का थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. So you need A, B, so yeah, here. Let's do it here like this.
Okay, so एक तो आपने order change कर दिया, and the second thing you need to do is you need to basically change and move it in the other order. मस्त ये हो रहा है कि मेरा change हो जाता है, but that doesn't matter. So इसका मैं smallest largest कर देता हूँ. अच्छा उसमें filter लगाया था वो नहीं हुआ. Let's just do this way. ओके, ये f वाला जो है उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर्मूला के अंदर, बिकॉज ये टेक्स्ट वैल्यू है, तो इसको आप वहां पे यूज नहीं कर सकते, बट द रेस्ट यू कैन यूज. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज आई एम गोइंग टू, तो आपको पहले डेटा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक तो असेंडिंग ऑर्डर में, और दूसरा सो इनके हर ग्रेड की मिनिमम वैल्यू है वहां पे. सो E की मिनिमम वैल्यू इज 50, D की मिनिमम वैल्यू इज 60 एंड सो ऑन. ठीक है, पहले मैंने इफ कंडीशन लगाई थी, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ देम आर मेस्ड अप बिकॉज़ हमने वो फॉर्मेट चेंज कर दिया उसका. अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली यूज अ VLOOKUP फॉर्मूला, एंड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से दिस इज लुकअप वैल्यू, गो इन द अदर टेबल, लुक फॉर दिस वैल्यू हियर. अब टेबल क्या अरे देंगे हम, 50 से स्टार्ट करेंगे, 50 और E से. वी फिक्स दैट टेबल. Which column do we want to extract from there? We want to extract from the, अच्छा खैर उसका भी हम दे देते हैं, वैसे f तक हम क्या कर देते हैं, 0 मिनिमम कर देते हैं. ठीक है, and that then we'll have the f grade as well. So VLOOKUP हमने अप्लाई किया इसके ऊपर, ये टेबल अरे है आपकी, we fix that table. कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम से वैल्यू उठानी है आपको उठानी है सेकंड कॉलम से, and you need an approximate match. वैसे हमने क्या किया, we go to the other table, we start searching for the marks here in the first column. 79 है, so we look at 0, we pass that 50, 60, 70, 80 पे पहुंच के it realizes I've gone past, so it gives the previous value. 70 पे आ गया और हमें सेकंड कॉलम चाहिए था, उससे C यहाँ से उठाएगा और C वहां पे रिटर्न कर देगा. ठीक है, we get C there and we just extend that and we got all the grading that we needed to do. सिर्फ एक VLOOKUP फॉर्मूला और approximate match उसका यूज करके we got rid of all those nested if conditions जो हमें यूज करनी पड़ रही थी पहले. We could just use it like this. ठीक है, the key is you need to have your grading criteria formatted in a way कि numbers are the minimum limits are on the left side, they're in the ascending order, grades are on the right, because आपको search किस में करना है, search आपको in numbers में आके करना है और आपको उसकी basis पर grade assign करना है. So that's why we need to have it in this order. ठीक है, is this clear? Any issues there? So this is an application of the approximate match function, approximate match input there in the VLOOKUP function. So let me know if you have any issues there, any confusions, anything. Is that okay? No problems? So can you try to do it yourself? हो जाएगा ये? Yes sir. जी सर, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह. All right, so there are a few small pointers now that are left, so I'm going to discuss some of those and I'm going to leave the rest. We might not have time to cover those. You can try to explore them yourself. There are some very simple things. आपको links भी share कर दूंगा. They're not going to be tested on these, but these are useful things that you could actually find helpful. So एक आपके पास what if analysis होता है यहाँ पे, जब ज़्यादा डिटेल में तो बाद में करेंगे स्प्रेडशीट मॉडलिंग के अंदर. I just wanted to give you an overview of that if we had enough time, but unfortunately we don't have enough time. So I'll just give you where to find that. आपके पास डेटा टैब के अंदर ना ये what if analysis होता है. So when you do spreadsheet modeling उसके अंदर ना you can create different scenarios, do some break-even analysis using goal seek function,
डेटा टेबल्स यूज होते हैं अगर आपने किसी इनपुट की परसेंटेजेस चेंज करके देखना हो कि उस पे क्या रिजल्ट्स आते हैं. फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्री को अगर आप एक प्रॉपर उसका मॉडल बनाओ, स्प्रेडशीट मॉडल, एंड यू वांट टू सी कि प्रोबेबिलिटीज को चेंज करके आपके फाइनल रिजल्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, you could use a data table there. Again, अभी ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा डिटेल में करेंगे later on when you do spreadsheet modeling in the analytics course. ठीक है, so that's why we since we don't have enough time, we will not be able to go into this today. But there's a couple of other things that I just wanted to touch upon. I'll just take a few more minutes for that. So I'll actually start with that. The other thing that's more important, that is कंडीशनल फॉर्मेटिंग. हम दोबारा पिवट टेबल में भी देखें दोबारा, लेकिन क्योंकि कल साजिद साहब पूछ रहे थे उसका, could have a look at that as well. So which was that actually? Which sheet was that? Do you remember, Sajid sahab? It was somewhere here, I think. जब आप कलर्स का पूछ रहे थे कि डिफरेंट कलर्स में किस तरह से आप कर सकते हैं based on something. वो ग्रेडिंग वाली थी सर. ग्रेडिंग में क्या कह रहे थे? कलर्स की बेस. सो यू प्रोबब्ली वांटेड टू इंस्टेड ऑफ ग्रेडिंग आप ये करना चाह रहे थे ग्रेडिंग के साथ साथ के आप उसमें रेंजेस डिफाइन कर दे कि इस पे कोई और, इस पे एक स्पेसिफिक कलर कर दो, इस पे स्पेसिफिक कलर कर दो. फेल हो तो वो रेड आ जाए. या सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज इफ यू ऑलरेडी हैव ग्रेडिंग डन, तो फिर तो बहुत सिंपल है. आप जाके सिर्फ उसको ये कर दो कि अगर ए लिखा हो तो उसको ये कलर दे दो, बी लिखा हो तो ये कलर कर दो. You have a condition to use. Let's try the simpler thing first. So something called conditional formatting. ठीक है, होम टैब में जाएंगे आप, उसमें conditional formatting की ऑप्शन होती है. यहाँ पे you have highlighting cell rules. Based on certain conditions you can highlight certain cells. You've got top bottom rules. Top 10 items को highlight कर दें. You can actually select the certain number of items that you need. Top 5, top 10, top 15, whatever you want. Top 10%, percentage wise आप select कर सकते हो. इस तरह से you can do the same thing for the bottom. You can highlight above average, below average. ठीक है, इस तरह से डेटा बायस कलर स्केल्स होते हैं. पिवट टेबल जब करेंगे यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे. यहाँ पे I'll just discuss that particular example जो साजिद साहब कह रहे थे. So what you can do, for example, is define a custom rule here. बस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर नीचे ऑप्शन होती है न्यू रूल डिफाइन करने. ठीक है, कुछ तो उसमें बाय डिफॉल्ट होते हैं, ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक वैल्यू, लेस देन अ स्पेसिफिक वैल्यू, बिटवीन अ स्पेसिफिक वैल्यू. ये कुछ आप ये भी कर सकते हैं. सो एक तो तरीका ये है, मार्क्स के ऊपर ये लगा दो. इन मार्क्स के ऊपर you could apply this conditional formatting, highlight cells based on let's say they're between certain value. So between, let's say 80 and 90, 20 सारे हाईलाइट हो गए. ठीक है, ये 90 और 100 के दरम्यान में जो हैं वो आप हाईलाइट कर दो. ठीक है, सो सारे ए ग्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो गए. ठीक है, थिंग्स लाइक दिस. अगर आप जो है इसको कस्टमाइज करना चाहते हो, you can define a new rule by yourself. यहाँ पे you've got all those different options. ठीक है, इसमें आपको तो हमसे of course we're not going to be able to discuss every single detail there. The idea is to just give you a direction there and you can try to explore it yourself. क्या different options होती हैं for this. For this particular case that Sajid Sahab asked for, you could, for example, format cells based on their values. और फॉर्मेटिंग की आपके पास ऑप्शन हो सकती हैं. आप कोई स्पेसिफिक कलर असाइन कर सकते हो. सो लेट्स से लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू. सो लोअर वैल्यू में आप असाइन कर दो नंबर कि अगर आपकी मिनिमम वैल्यू जो है वो स्पेसिफिक एक हो. लेट मी ट्राई दिस. सो फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन आल्सो only values that are above or below average. Okay, so इसमें आप ये कर सकते हैं format only cells that contain cell value that's between, यहाँ पे आप लिखते हैं 90 and 100. ये तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. You can also refer to some cells that contain this information. आप वहाँ पे जाके
उसको रेफर भी, उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं सेल का, और इसमें फिर आप डिफाइन कर सकते हैं क्या फॉर्मेट आपको रखना है. सो ए ग्रेड इसको फॉर एग्जांपल मिनिमम वैल्यू इज 90 and the greatest could be 100. So format आप इसको डिफाइन कर दें, इसको आप कर दो, इसको फिल कर दो with a certain color, so let's say green color. ठीक है, green के different shades कर लेते हैं. So this is a darker one, ये हमारा हो गया A grade इसका. ठीक है, so that's one possible rule that you could have. So press OK, ये आपका एक rule define हो गया. What you could do now is you could add another rule there. अब दोबारा conditional formatting में जाएं, define another rule. जिसमें आप again format only cells that contain specific values. So let's say 80 से लेकर 89 तक you should have a different color, have a lighter green color. ये आपने define कर दिया like this. इसको OK करेंगे, it's going to be applied there. आपके B grade उस color में define हो जाएंगे. ठीक है, similarly आपने F grade को कोई और color assign करना है. Again format only cells that contain specific values that are below, let's say यहाँ पर different options आ रही हैं, between something, not between something, equal to something, not equal to something, greater than, less than, and so on. आपको क्या चाहिए? You need less than something, right? So less than 50 अगर होगा, it's going to be assigned an F grade. यहाँ पे in fact इस केस के अंदर 70 तो 70 कर देते हैं. So all the F graders are going to be assigned. apply नहीं हुआ. अच्छा वो same color शायद आपने वो color select नहीं किया जी. Color select नहीं किया. So let me go there again. So less than, यहाँ पे we could do 70, and we would have let's say red color here, yeah, orange color. Red में शायद readable ना हो इतना. So we assign this, press OK. या आपके F grade वो color assign होगा. ठीक है, so इस तरह से आप खुद से define कर सकते हैं certain format. आपके पास एक और भी option होती है, that's generally what you would prefer. आपके पास ये color scales होते हैं. For example, ये color scales क्या करेंगे? आपके higher values को एक certain color दे देंगे, lower values को एक scale के ऊपर आपको define कर देंगे. इसके अंदर higher values are whiter and the lower values are more green. एक और scale है, higher values have dark green colors and lower values have light green and then white. So green white color scale है. इसी तरह से you've got other color scales from red to green. So it's red when it's the lowest color, it's the lowest value. It keeps changing to yellow and then green for higher values. ठीक है, so you've got different color scales available here. अब इनको देख सकते हैं. पूरे सेल को आपने नहीं कलर करना तो आपके पास ये ऑप्शन होती है of icon sets. ये क्या होता है, जो मिडिल में वैल्यूज आ रही हैं उनको येलो कर दिया और उनको हॉरिजॉन्टल एरो दे दिया, जो हायर वैल्यूज हैं उनको ग्रीन कर दिया और उसको अप एरो दे दिया. जनरली ये काफी रेयरली यूज होता है, ज्यादा आप कलर स्केल्स यूज करते हो. डेटा बार्स में क्या होता है, आपके बार्स की लेंथ भी वेरी करती है बेस्ड ऑन द कलर्स, बेस्ड ऑन द वैल्यूज. फॉर एग्जांपल इन दिस केस आपका एक तरह से बार चार्ट बन गया फॉर एवरी वैल्यू, फॉर एवरी सिंगल वैल्यू के कितनी बड़ी वैल्यू है, राइट? सो लार्ज वैल्यूज गोइंग टू फॉर लार्ज वैल्यूज इज गोइंग टू कवर द होल सेल, फॉर स्मॉलर वैल्यूज उसकी उतनी रेशियो से उसको कवर कर देगा. ठीक है, सिमिलरली यू गॉट अदर ऑप्शंस देयर. टॉप बॉटम रूल्स के अंदर स्पेसिफिकली एक बहुत यूजफुल है, अबव एवरेज या बिलो एवरेज को आप हाईलाइट कर दो. सो इन दिस exam, for example, I could highlight all the students who scored above average, and the others would remain not highlighted. Okay, now बहुत सारे different options होती हैं. We'll try to use them again later on as well when we do pivot tables. And जब आप data show करते हो ना किसी भी तरह का that's large और इसमें से information extract करना is directly not possible because if they're large enough तो उसके अंदर आप अक्सर conditional formatting use करके you can highlight certain aspects of the data based on these conditions. Okay, so this is conditional formatting. We will discuss this in a bit more detail in our next 2 sessions as well, जब हम pivot tables or pivot charts discuss करेंगे. Okay, so that was one other thing, and there's one more thing, and I'll just take 2 or 3 more minutes and then we'll start the quiz. And that's basically data validation.
This is another thing that I wanted to mention. So basically, होता क्या है when we're inputting values, आपके पास आपने कोई एक let's say एक structure बनाया हुआ है, एक table जिसके अंदर different people are inputting some values. So let's say आप एक standard template भेजते हो 2 different people of that looks like this. ठीक है? Okay, whenever they make a sale, for example, you have different salespersons or different salespersons को ये template भेजते हो कि whenever they make a sale, they input all of this information that we have here in that template. तो उसमें वो क्या करते हैं? You've got the distributor name there, you've got the product, you've got sales channel. अब इसमें problem आती है standardization. ठीक है? So different people are going to input values in different ways. So dates, for example, different people are using different formats for it, right? Which is not ideal. अब इस पे कोई analysis run नहीं कर सकते because all of these are different things. So we need to standardize this somehow. ठीक है? Similarly, quantity. अब कुछ लोगों ने सही रखा हुआ है. Some people, माशाल्लाह, उन्होंने जो है वो उनको ऐसे लिख दिया जैसे वो check sign कर रहे हैं 199, right? So words में लिख दिया. So it doesn't. You cannot do any analysis in this because these are not recognized as numbers in Excel. तो आपको इस तरह के issues को basically minimize करने के लिए you can do some standardization. इसी तरह distributor name अगर कोई यहाँ पे input कर रहा है, it's very likely they'll make some spelling errors there. Yeah, वो Zahir fields को they could possibly write Zahir Z-A-Z-A-H-E-E-R. Somebody could make that error. So how do you take care of these issues कि वो एक standard चीज input कर रहे हैं? Similarly, यहाँ पे कुछ लोगों ने product के अंदर product codes डाले हुए हैं, कुछ लोगों ने उसकी proper description डाली हुई है. So how do we standardize this thing? So something called data validation that we can do here. So एक तो इसमें आप ये कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे ना data के अंदर, आपके पास इधर option होगी data validation here. So let's say आपने distributor name यहाँ पे. So let's start with a simpler case. So quantity से start करते हैं. So quantity में आप क्या कर सकते हो? You can select all this column. या जितना भी आपके पास वो बड़ा form है, आप पूरे वो column select कर लो उसके अंदर. You go to data validation. यहाँ पे आप data validation पे click करें. You can basically define कि किस तरह की values यहाँ पर आ सकती हैं और किस तरह की values यहाँ पे नहीं आ सकती. ठीक है? So for example, what you're going to do here is settings में आप क्या करोगे? By default, Excel के अंदर you can input anything that you want, right? You can restrict it. You can say, I only want a specific type of number here. Okay, so you can, since it's a quantity, you can say there should be a whole number there. Okay, कोई decimal नहीं होना चाहिए. It should just be a whole number. ठीक है? अब उसके बाद आप define कर सकते हो, should it be between some certain values or it could be any value. इसमें आप, for example, you could say it should be greater than 0. Negative number ना फिर डाल दे quantity. ठीक है? 0 से बड़ा होना चाहिए. 0 तो आना नहीं चाहिए यहाँ पे. Sale है नहीं कि quantity 0 है तो 0 से बड़ा number होना चाहिए. That's one validation you can input. You click on OK. अब ये क्या होएगा? When you input anything here, that satisfies that criteria, you'll be able to do that. But if you input, for example, something, if you input some text here, you click on OK, you will not be able to do that. Because आपने restrict कर दी वो values यहाँ पे input कर सकते हो तो standardization के issues आपके पास नहीं आएंगे. ठीक है? Similarly, आप यहाँ पे और आपके पास options हैं यहाँ पे, for example, date के अंदर आप जाके क्या करो, data validation में जाओ, allow only the date format. So आप date input कर दो और यहाँ पे आप ये भी define कर सकते हो date आपको किन के दरमियान में होना चाहिए. So for example, date अगर कोई डाल रहा है 1900 something, maybe there's a problem there. So आप क्या करो, there should be a start date somewhere. ठीक है? आप start date आप वहाँ पे define कर दो कि उससे आगे होना चाहिए, या between आप define कर दो, कुछ भी define कर दो अगर आपको कुछ इस तरह करना है. So that's one thing. Date आप कर सकते हो, quantity में आप define कर सकते हो अगर आपको specific values के अंदर चाहिए. So things like this. ठीक है? Just the last thing. You can also define certain values that can come here. So for example, sales channel, for example, there are only 3 values that are coming up there: online, direct, and retail. तो आप ये restrict कर सकते हो कि अच्छा यहाँ पे जो values आए ना, इन्हीं 3 में से कोई value आए, इसके अलावा कोई value नहीं आए.
So you go to data validation again. आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? You can allow only a specific list of values. ठीक है? आपने list allow करनी है. Side पे कहीं पे लिख कर आए. So यहाँ पे for example मैंने right side पे ये list डाली हुई है. So you could hide this column. You could have it at another in another sheet. That's safe. जहाँ पे आपने सारी information store करके रखी हो. उसका प्रोटेक्ट भी कर सकते हो those if you were interested. So आपने क्या किया? उन तीनों को आपने लिस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया. You click on OK. You click OK again. And now what happens is आप इसके अंदर ना सेल्स चैनल के अंदर इन 3 वैल्यूज के अलावा कुछ भी डालोगे it will give an error. और ये आपके पास तीनों वैल्यूज यहाँ पे ड्रॉप डाउन में भी आ जाएंगी. So you can select from the drop down. इन्हीं 3 वैल्यूज में से आप यहाँ पे कुछ डाल सकते हो. इसके अलावा you cannot input anything else. ठीक है? So that restricts the inputs and standardizes your data. So you can do the same thing for your distributor names, your products. अगर आपके you have a defined distributors list, you've got a defined product list. तब वो भी यहाँ पे restrict कर सकते हैं that these are the only values that should come. So for example, अगर इनके कोई approved distributors थे जो मैंने यहाँ पे right side पे लिख कर रखे हैं, let's say, I could again do the same thing here. Select the whole column, select data validation. Select a list from there, click on OK. Sorry, यहाँ पे select the list from there. List मैंने right side पे यहाँ पे लिखी हुई है. ये मैंने list यहाँ पे दे दी. इन नामों के अलावा मेरा कोई approved distributor नहीं है. इन्हीं में से कोई आना चाहिए. So that will remove your spelling errors as well. ये मैंने define कर दिया. Click on OK. And when I go there, I can only select a value from these names. And other than that, it's not going to accept. मैं कुछ खुद से कुछ लिखूंगा. If it's exactly that, if it matches that, then it's going to accept. Otherwise, it will not accept. तो आप यहाँ से list से choose भी कर सकते हो if you want. ठीक है? So that's data validation that you use for sheets that are going to be used by multiple people. और आप उसमें restrict कर सकते हो कि what type of numbers or values can come in that particular thing. ठीक है? So again, I would actually advise you to experiment with this. Look at all the different options that are available. List सबसे ज़्यादा काफी commonly use होता है. Whole number और decimal ज़्यादा use होते हैं. Date भी use होता है. आप इसमें text length भी specify कर सकते हो. For example, there's a comment column जहाँ पे आप उसको liberty दे रहे हो. You can input anything. आप उसमें comment की length specify कर सकते हो कि अच्छा ये नहीं है कि आप उसमें paragraphs लिख रहे हो. There should be a certain, let's say 200 characters की limit कि इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए comment. ठीक है? So आप custom भी define कर सकते हो. You have a look at that. Custom में क्या options आती हैं. So these are some things that are for you to experiment. यहाँ पे आप custom formula लिख सकते हो basically. But again, we don't really have time to discuss this in more detail. These are the common things that you use here. Your list follow function is really useful for many people. So this is something that you should keep in mind. कि आप ये list जो यहाँ पे drop down जो है ये आप यहाँ पे data validation को use करके you can make a drop down like this. Again, I'd encourage you to experiment more and try to figure out what other options are available if there's something that you find useful there. Any questions on this? Any problems? Is this clear to everyone?